Recording in progress. Recording stopped. Hello, 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 hello. इसमें बहुत कम आवाज है। हेलो, 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 हेलो। है ना? बता रहा हूँ। ये सबके जेड है। आवाज। हेलो, हेलो, हेलो। है ना कदम है।
Actually, I think you all had a question with it. To pick up where we left off yesterday, we had a presentation by NTPC Lara on load fluctuation at NTPC Lara and partial discharge real world diagnostics. Then we had a presentation by JPL Kamnath, generator, filter, repair, and generator breaker modification. Then by JW Jharsuguda on islanding scheme implementation. Then best practices in OMM and a brief overview of e-learning by NTPC Darintami. Then condition monitoring of electrical equipment by the director of GIFT. And then some case studies from NCTC COS site. So today we are very left off. For today's session, I would like to call Mr. Sanjay Jaiswal, OEM at L&D Writer, to carry forward with their presentation. Please, sir. Have a round of applause. Hello. I'm audible. Good morning, all. Hope you are having a great day as of now. And yeah. Hello. 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 Good. Voice is clear? May I know who I'm talking to today? Who all are there? We are students or working professionals. Okay, mix of them. Okay, so today what I will be talking about is motor protection and one of our product that is called IMMR, Intelligent Motor Management Tool. Now, when we talk about protection of a motor, the general cause for which the motor gets absolutely damaged is due to insulation failure, due to overheating, and many times motors show the 70% of load of our electrical system, as we all know. So what we are doing with this protection, because ultimately what we have to do was protect the motor, and we are in doing so from last many years. From the invention of motor, we have to protect it. So why this relay? What is crucial in this relay? Why we are talking about, because as of now we were using thermal overload, using the bimetallic soot, using the characteristics of different conductors under a particular limit of current. So why IMMR? As of now, what is important? The downtime. Because when we are talking about the power plant starts today and it runs for years. A single downtime of a megawatt generating power plant will cost to a lot extent. And right, what we have to face, we have to face the downtime. And for downtime, what we have to do, we have to increase the reliability of the system. And for increasing the reliability of system, we have to understand what is going on with the current voltage or electrical equipment. So how we are able to match it and how this really will improve our understanding of the current system. So next please. Okay. So now what we have to do, this is the, just a second, this. Uh, so everyone must be knowing about star delta pattern main delta star that we are doing with it. So what we have to do is that for taking any signals from the motor channel to a DC, what we have to do to one, we have to have emergency contacts, for which we have to take the signal of the start stop command to the DC circuit, right? And it will be utilizing a lot number of ways while doing so. So this is a standard. What we have to do till now. Now what we are doing.
This was the wire mesh. When we look at the actual, this is the wire mesh with each and every server. And while if anything goes wrong, then we have to identify normally the truth lot more messier than this when we are talking about the huge entity timer. So how we are able to achieve it, how we are able to make the system lot more simpler and easy to produce it. What happened? So what this is our value. I will talk it about later on what we actually do from it. Can we directly come to the control, what is the connection diagram goes of this one. Next, we have seen a star delta starter of a conventional entity. Now using this relay, what we are able to do. So this is the main unit of power. It is having a terminal scale inputs, and this is the auxiliary supply. And this is utility unit we are able to do. But we want to measure current because of how measuring current only, we will get to know about the later functionality, how it is working with current, it is taking how mechanical information, how much it is loaded. So we are measuring it through a utility unit. We will later on explain what it is. This is the main one. This is the extension unit. So see, when we are talking about the wiring method, no, star data control logic wiring, but we must be knowing this is the control logic star data and a timer with a second of seconds as you can handle it. So what we are doing in this one, see, one wire is coming from the output terminal of this unit, going directly to the main. Okay? One output to go directly going to the data. Now, this data is small. Now, the common terminal that has power is like a creative logic, like a brain creates it. So, what will happen? This output having its own memory, its own logic, what it will be, which contactor it will start first, will start delta. It will be a discussion, and we have to talk about one of it. It will be a mutual discussion to most students, engineering works. Okay, so what is the first? Let's start delta starter, simultaneously, main and star. Okay. So what it will be, it will pick up the main and star, and then after a certain period of time, it will go to delta. Now what will happen is, R is not fixed. What will happen? Direct motor is getting on a delta. The purpose of star delta, so what you are doing over there, you are reducing the connection by connection from the middle of the input. When we implemented the element, see that actually simple. When we fold, there are not many wires looking at same color when we do what we have to do. In this way, we reducing complexity of the system. This is directly. Now, similarly, when we do this, what there is panel based start, node selection, local or remote, right? This, these are already there. But we are doing one having some mainly that's having all connections going to it defines connections we are having. And easily we can check what is going on. What is going on? So when we taking up time on it, what we are offering is that now I will go to the product side of it. So this is our PP unit, this is our main unit, and a display unit. Okay. And it will this small it is when we are looking at a panel. And it's having a communication protocol, processors, Modbus RTU, TCP IP, all three communication protocol we are having in it. So this main unit can be mounted on a CPU unit. Here you can see the pins are there for the cable entry and everything. Like we used to have in CPs, and this is the display unit. One more thing when we are talking about it, the capability of this unit, it does not detect the motor. So I was stating because motor is already being detected in thermal economy. So what we are doing, it is intelligent motor management unit. It detects, this control, and it monitors. Right?
when we are talking about makeup, the thermal image of motor is also important. So it gives a like a thermal imaging of motor. It is having an integrated sensor, which is as of now free, and we show it's kind of cool. So it looks like this when we are mounting a camera, this concept it is. Yeah. As I was telling, a single motor what it is doing is that lithium function is already inbuilt in the solar. So what we are able to manage on it, we are able to manage the current, water cycle, power, output cycles, energy cycle, and starting time and current of the network. But what will happen when we install a new project is work, we are having a plant and a network that many times it happens in field, we will be acknowledging to the chart, then installer to you, the motor chalaते. That's all. Many times it happen. Mechanical wala and electrical then we have to specify the motors, then we have to check whether the motor is on is it taking a right current or not. Then we have to check the installer routes. But that will take a lot amount of time. Once you have this kind of a capability in a motor, in a living, what will happen? Like we know though that motors take the fixed time of current, then it runs down to burn. Because they really have an initial graph of a motor. Yes, the previous slide we have to get those graphs can be checked. Whether the time that was being taken at first and the reduction time of the current was stored the same or it is increasing. That kind of analysis you can do on the data. So, we have a lot of compatible industries like that. Like there are a data and because of data, yeah, but you can really answer there. But we want to integrate the position. Now, this motor running out, number stuff. This also not even would not sale also. We used to have a different hardware as well. Now, that the motor running in that, yeah, sorry, taking the motor. Now, you are having four pumps in a control, then we are able to yeah. Now we not know what will be the life of that particular method because the chemical will not change over routine. So it will happen all 3 meters that are one cell ago after 1 year, the time of time that will be reminded overall at once. Because of bounding of one, now maintaining the required bounding lifetime of the outcome will definitely help to keep the system to the reliability level. And this IRS that I was talking about, the kernel memory of the method, the method is nothing alone, water traces current and magnetic field rotating around. But the only thing is that overwriting causes insulation channel and that moves to earth as the boundary. And that's why we say the motor jogging. Motor कभी नहीं होता है, insulation channel का. And just click record, click has to start from monitoring data and starting about. What will happen when you are talking about safety? More cooling towers are there, proton filtration sensors are there, low levels of the gearbox are there. It also can be interact with this relations. But कई बार होता है बड़ी लोकेशन में यूनिट भी नहीं तो अगर होता नहीं है तो बोरिंग चीज होने का चांसेस रहते हैं तो अगर वो नहीं है तो डेटा चालू नहीं करना चाहिए और ये सिंपल होती है हार्डवेयर से हो रहा है ये ना तो आपको इसलिए कुछ और नहीं मतलब नगर में तो अच्छे पूरा तो आपकी बात करनी चाहिए
Yeah. Now, what are the comparison check? Bola ये देना not only for method protection ethics or management as a method. First, what we talked about is method. Now we are talking control. Control, we got the logic functions as we know, and are as well not. What we can do, right? When we are having to make simple example I'm telling you, if you are having to say whatever control, you have to see that दो कम चेष्टा चला तीन कम चेष्टा चला चार में तो इतना टाइम हो चाहे फिर वो तो मतलब तो चल रहा है so it kind of logic you can do just rely on that programming we have logic it is so that advanced role it is not protection so protection फोर लोग मोटर में करंट भागने लगे फैक्टर कुछ भी हो सकता है बोरिंग है मोटर का उपला होगा फिर इसके अलावा मैंने टाइम देखो जितना वोल्टेज जितना क्या होना चाहिए मोटर को वोल्टेज जितना मोटर कैसे प्रयोग करता है will be requiring answer from engineering person है इंजीनियरिंग वो अभी कर रहे हैं कौन सा वो है मतलब वोल्टेज डिप में क्या होता है मोटर क्यों लगाना चाहिए वो वोल्टेज कम होगा करंट बढ़ेगा अगर वोल्टेज ज्यादा देर के लिए कम है तो करंट ज्यादा होगी नहीं इसमें मैं देखो एक चीज को मैं बताता हूँ वो एक्सीलरेशन वोल्टेज ब्रेक पर्टिकुलर साइकिल ऑफ पावर साइकिल को लिखना हुआ तो वोल्टेज बना होना चाहिए मतलब है मेरे साथ बात बात के ऊपर समझना होना चाहिए मतलब वो कंपनी को वोल्टेज पावर का करती है इसको आपको चार्ट दिया करिए तो ऑपरेटर भागते भागते चालू में करना करिए तो ताकि हम लोग नेटवर्क बहुत जरूरत है होगा होगा वो communication is now everything we now want to be connected. We want each and every data to be on our phones. You know, the virtual data reference and everything. Communication is already there. अगर कोई ना किसी भी मामले का आती है किसी को ऐसे को किसी को आते प्रतिकार अंदर होगी now this many times जब ये इंसान करना है हर बार सेटिंग चेंज करना पड़ता है हमारे को वो फंक्शन कैसे करें इसकी कैसे कैसे सेटिंग्स हम मान लेते हैं हमारे तो लेटर होते हैं सही बैटरी नंबर जाके तो बैटरी वाले तरीके से तो हमें नंबर भी देना है तो so that's why also we get the stores that were required. Now, looking to operating mode, we can connect that particular message to single channel. So that actually I come from maintenance background. I know what kind of a problem they have also. What normal interface only है. लेकिन हम इतना नहीं जीवन आदमी चालू और बंद हो क्योंकि लेकर बंद हो वाक़ई बहुत पता नहीं चलता है that narration of it actually पता नहीं चलता but when we do such a thing साफ मतलब जो चल रही है कि फ्रंट पेज डेवलप करके आ जाओ देखते हैं कि क्या होता है लेकर बंद है डिसीजन मेकिंग राइट होते हैं when we are talking about the skill for the skill task of the department होते हैं इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन anyone from school नहीं है school इंग्लिश में customers बहुत इम्पोर्टेंट पावर प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट शॉट तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पावर प्लांट के नीचे ग्राउंड फीड पंप होता है बैलेंस फीड पंप में तो मोटर है इसका रिलायबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए तो उनके सॉल्यूशन में वो सब चीजें आती है तो वो ये मतलब लेकिन एक्चुअली मोटर ही सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में इसलिए मैंने आज वो टॉपिक ही चूज किया इंटेलिजेंट मोटर मैनेजमेंट के लिए मैं what you can do इसको हम स्लाइडर में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं मैं ठीक है वो तो बोलेगा हो गए अब last 5 minutes anyone want to ask anything about our company or product I know to make a solution but I have after I am working as a business development manager in 70 I'm not available okay okay
Okay. Okay. Tell me three biggest takeaway huh, out of three biggest. Three biggest takeaway from this session. One by one. Okay. Okay. Then I Okay. So first of all, what I will say is the control wiring complexity reduction that we are doing with this release. Complexity of wiring control wiring. First of all, it is the capability of this release. Second one, also, capacity really to store data and we have several data that are being moving in the particular release. Like the starting time, the number of hours. Okay. आपकी जो प्रेजेंटेशन थी इस प्रेजेंटेशन का जो मेन फोकल पॉइंट था वो था मोटर Okay. right okay so when I'm asking this particular questions three biggest takeaway you talk in regard to motor only Okay. talking about accessories and other aspects in what way this particular unit will help the motor itself Yes. उसको बताओ ना तो क्या जरूरत है इसकी Actually, this renewable, we need that this renewable height from motor personal understand the motor. Without understanding of that particular motor, as I told you, that the thermal imaging of that motor, now looking at the data from what is the really storing on it, to calculate the thermal loading of that particular motor. Level that is being utilized. Now, जैसे कि अगर completely having thermal capacity of a do you think that this particular monitoring of data is required when you look at any type of motor irrespective of any kilowatt rating and any size definitely, why definitely it is required because then only because motor चल रहा है बंद दिखता तो है इसको अंदर क्या चल रहा है ये नहीं what दिखता is the extreme condition of the motor when the temperature rise of the rotor and the temperature rise of the stator will be maximum मतलब at what condition it is ऐसा कंडीशन बताओ जिसमें इस मशीन के clock rotor solution लॉक रोटर कंडीशन yeah उससे बड़ी सिवियरिटी जो है वही सबसे rotor right yeah I know the temperature rise of motor yeah stator as well as yeah ठीक है ना Yeah. under lock rotor condition yeah then why to monitor all these things? yeah fix that I will counter now I will answer later because 100 in one chances it may happen that rotor is getting done as a first time. yes The temperature rise will be that point. सुनो ठीक है let us not dream like it ठीक है ना हाँ in big power plant जो है ना there are multiple kinds of uh, there are multiple kinds of protection system ठीक है what will happen when the motor gets stalled what will happen Meaning, what will happen when the motor gets stalled? what चलो मैं वही आता हूँ Happen. ऐसा है ना you talk about the relevant things ठीक है Yes, sir. I'm not just telling you No, it's not an issue. It's always good to have a discussion. but discussion has to be has to carry some kind of objective as well Yes. right uh, if motor is in stall condition and if it is subjected to the nominal voltage what will happen to the system you think that we don't have anything in our system It's not like for then what will happen what at the condition of motor stall. Huh? Stall condition when you the rotor stalling condition, but will क्या होगा motor currently take a good amount of current and it will what is the trip upstream over the ऐसा नहीं होता है डियर Okay. ठीक है ना ये मेंटेनेंस का काम किया हो ना तो मैं आ गया अच्छा ऐसा है when motor is under stall condition ठीक है ना okay when slip is 1 that's okay fine. and if stator winding is subjected to full voltage this particular if the nominal voltage is the same for which this particular motor is designed Okay. then this particular motor
will draw the same magnitude of the starting current जो कि फैक्ट्री में उसने लिया था at this particular rated voltage. Okay. पूरी बात थी, ठीक है. अब क्या है, नाउ मेरे पास 3 ऑप्शन है. इस लाइन में 3 प्रोटेक्शन. Okay. एक है हाई सेट प्रोटेक्शन, ठीक है. दूसरा ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है. और तीसरा अर्थफॉल प्रोटेक्शन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेशन ऑफ द मेन. Okay. अब ये जो तुम्हारा ओवर करंट जो प्रोटेक्शन जो होता है, ठीक है ना, इट इज हैविंग आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक, राइट. So if any particular motor is completely stalled and it is subjected to Okay. nominal voltage, okay, depending upon the IDMT plot curve, this particular drive will trip after that much of seconds. Yeah, that is Now second scenario में ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं लगा हुआ, सिस्टम मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है. नाउ टॉक अबाउट अदर थिंग. सपोज करो कि इंस्टेड ऑफ 100% नॉमिनल वोल्टेज, if I apply 110% of nominal voltage, what will happen? नहीं देखिए नहीं, आप मुझे ये आप यही मैं बता रहा हूँ, बताइए ना, यही मैं बता रहा हूँ. for the relevant. I'm telling you, sir, what will happen when the slip is 1. So, what will happen? जाओ यार, क्लिप पे कहाँ चले. 110% मैंने वोल्टेज लगाया, स्टार्टिंग करंट क्या हो? स्टार्टिंग करंट तो उसको मतलब 110% ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज आपने लगाया ना, हाँ क्या, स्टॉल कंडीशन में. हाँ स्टार्टिंग करंट दी Right. वो एड्रेस, नहीं नहीं, एक मिनट सर. स्टार्टिंग करंट वो, ठीक है ना. देखो मैं ऐसा, मैं ऑडियंस, मैं ये जितने हमारे फीमेल है जितने हैं ना, मैं आई एम टॉकिंग, व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज उनके बेनिफिट मिलेगा. हाँ हाँ, एनीबडी कैन आंसर, एनीबडी कैन आंसर. नहीं तो वी आर ऑलवेज ओपन टू अ डिस्कशन. ऐसा है ये डिस्कशन फॉर देम, या या आई वांट टू बी लाइक मी. गेट बेनिफिट्स. हाँ नो नो नो, नॉट एन इशू. अब देखिए, हाँ ऑफ कोर्स सर, मेरी उम्र नहीं है जितना सर का एक्सपीरियंस होगा. नहीं नहीं यार, मैं एक्चुअली क्या है, देखो मेरा मेरा जो बेसिक बेसिक मैंने प्रेजेंटेशन हो गया. प्रेजेंटेशन हो गया. एक्चुअली क्या है सर, एक्चुअली क्या है कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव द क्लैरिटी, दिस इज द ट्रेजेडी, दिस इज काइंड ऑफ, हम इसको ट्रेजेडी गलत वर्ड यूज कर लिया. हाँ, पावर प्लांट सिस्टम में क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी स्पेसिफिक इन गिविंग योर डिसीजन एंड गिविंग योर आंसर, राइट. आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऑपरेशन बैकग्राउंड के है, अननेसेसरी जो है आपकी मशीन जो है बिकॉज ऑफ द बैड एंड रॉन्ग डिसीजन जो है 4 दिन तक पड़ी है, ठीक है. तो व्हेन यू लुक एट एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू लुक एवरी प्रॉब्लम वेरी डिफरेंट, डेफिनेटली हाँ प्रॉब्लम है. वेरी डिफरेंट. चलो एक जगह आपने लिखा, उसमें क्या होगा, द स्टार्टिंग करंट विल इंक्रीज, ठीक है ना. अब देखो मैंने हाईसेट प्रोटेक्शन की एक बात की, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर मोटर, उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज, से 2 to 5% एक्स्ट्रा जो है हमने इसकी सेटिंग कर रखी है. जो नॉर्मली कभी कभी सिस्टम में ओवर वोल्टेज होता भी, तो उस वक्त मोटर जो है नॉर्मली ट्रिप नहीं है. एक चीज बताइए, आपने इस विले में हमको दिखाया था नो लोड करंट जो है चेंज हो जाए. आपने एक जगह बोला था कि मोटर स्पेसिफिक जो पैरामीटर दिखाया था आपने, जिसमें एक एडवांटेज में दिखाया था कि ये नो लोड करंट जो है कैप्चर करता हाँ, है. नो लोड अब एक चीज बताओ, नो लोड करंट कैप्चर करता है, तो मैं नो लोड करंट जान के क्या करूँ? नो लोड करूंगा सही चलो ट्रोलिंग से अंदर और करते हैं. जैसे जो भी सिस्टम है, मोटर आप लोड नहीं चला रहे हो, आप लोड नहीं चला रहे, मोटर के करंट को कैप्चर करते हैं कि मोटर में करंट कितना है और कितने टाइम कम है, ये कैप्चर करता है. बाकी नो लोड कैप्चर करता है. मोटर की नो लोड की जब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नो लोड आपकी, तो आपको जब वो डिसाइड करना पड़ता है कि मोटर चाहिए या इंस्टॉलर चाहिए, तो उस टाइम पे आपको नो लोड करंट पता होना चाहिए. आपको पता है, ठीक है ना. नो लोड करंट ऑफ एनी ड्राइव इज फिक्स्ड, इट विल नेवर चेंज. हाँ तो तो जानना जरूरी नहीं, नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज.
एक तो वो वोल्टेज डालते थे। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ चीज। तो मैं बता दिया स्टार्टिंग में ट्रेनिंग। हाँ, तो एक्चुअली जब क्या है ना, जैसे आप बोल रहे थे आप प्रोटेक्शन, नहीं लगाया है? हाँ ऑलरेडी जीएसपी में आपसे पूछे थे। अगर लगाया है? एक्चुअली सर वी आर टॉकिंग अबाउट पावर प्लांट राइट नाउ। तो आपने जो बोला ना मीडियम के क्रॉस के हिसाब से वो क्लिक करे हो, तो हमारा दिन तो स्मार्ट है। ट्रेनिंग का तो जितनी सारी चीजें जिसका मैं आई वाज लुकिंग फॉर रेलेवेंस। ठीक। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड इन गिविंग द डिसीजन, ठीक है, Yeah. तो एक रेलेवेंस की बात होती है। हाँ, वी नीड टू कंसीडर ऑल द पैरामीटर इन गिविंग वन आंसर। आई थिंक नो। it depends sir. It depends to person to person. चलो कोई बात नहीं। क्योंकि दिस इज फॉर, ठीक है ना? हाँ, मैं जो है ना, हाँ, इट इज फॉर देम नॉट फॉर यू। Yeah, sir, it is for more also. I am running. अदरवाइज मैं पूछता ही नहीं। मैं टेल यू वी आर वेरी प्लीज टू हियर दिस। अच्छा है। वेरी स्टॉप कंटिन्यू इन Training centers, yeah. We are having a training center We are network. also trying to establish a center of excellence with their L&T switchgears. So I think very soon, your Gignesh Rai Yeah, presenting a commercial offer, and of course we'll be getting your faculties, your trained Training faculties to faculty. train our own people, because यहाँ हमारे स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इंजीनियर्स भी हैं, हमारे Okay, who are having more than 5-10 years of experience over here. okay. So I think this is a good interactive session for all of you. And also, I would like to tell you that we are having a immense amount of L&T installation also in Jindal. We know, L&T, Siemens, ये तो सारे, please continue. So, okay. चलो हाँ, हाँ. इसमें CCTV दो टाइप के CCTV यूनिट होती है। जनरली हम CCTV कमाते लेते हैं। देख रहे हैं ना, इसमें हमारे पास दो मॉडल आते हैं। एक CCTV आता है जिसमें कनेक्ट मॉडल आता है, जनरेटर आता है। जो कन्वेंशन के लिए यूज होता है, अलग अलग यूज होता है। एग्जिस्टिंग स्विचगेयर में ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कैसा एग्जिस्टिंग स्विचगेयर हमारा जिसमें ऑल्टरनेटली आप कर सकते हैं। इसमें आपकी इंस्टॉलेशन में देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट तो हमारा यही है, मोटर को प्रोटेक्ट करना। सिटी का सेम सिटी का सेकेंडरी यूज करना पड़ेगा सिटी ये जो छोटा इसकी खुद की सिटी की सिटी अगर है तो हमको कहीं ना कहीं बस में देना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए हम लोगों को बस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। डाल सकते हैं, ये तो मैं आपको बता दूंगी। इसका सिटी का एरिया दिखाइएगा तो फिर हाँ, वो जो है ना देखिए जो छोटा यूनिट है, वो आपका जब खाना में यूज करोगे तो वो ध्यान उसके अंदर से जाएगा। हाँ, ठीक है। एक्चुअली ये डिस्प्ले यूनिट भी है हमारे पास, मतलब ये लाए भी हैं। आप इसको कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर प्रॉपरली आपकी डाला दोगे तो बस ये वो क्या बोलते हैं, इट मीन 45 किलोवाट प्रति। इसके ऊपर जब आपको यूज करना है तो प्रोटेक्शन का आप पेपर लेके इसमें डेटा को इसका क्रॉस सेक्शन इतना हो जो ट्यूब पार कर देगा, ये 7 डिजाइन है। up to 60 डिग्री। इसका सेकंड जो हमें कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। हाँ, थर्मल साइकिल भी इसकी लोड करके रखेगा। इट मीन ये मेरे लिए एचटी सिस्टम जो हमारा रहता है उसमें न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन ले रहती है, उसमें तो थर्मल साइकिल हमारा रहता ही है, प्रोटेक्शन रहता है।
एलटी स्विच गियर के लिए भी ये हमारा काम है। ये main- एलटी कुछ करते हुए काम करेगा जब मैं पढ़ना वाली बात करता हूँ वाटर इंटरव्यू होती बातें बातें होती है तभी हुआ जब कि वो भी करेगा और जो लोग करता है कि मेरा क्वेश्चन है जैसे एसटी स्विच गियर में जो न्यूमेरिकल रिलेज यूज होता है उसका जो इक्वेशन है वो दो चीज पर डिपेंड करता है पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस नो 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 जस्ट आई एम कंपेयरिंग तो ऑन व्हाट करंट इट विल डिपेंड इसमें इसका थर्मल इक्वेशन कैसे काम करता है पॉजिटिव सीक्वेंस आ रहा है और फेज लॉस के लिए हंड्रेड प्रोटेक्शन है अच्छा ओके ये प्रोडक्ट हम लोग चाहते हैं एक्चुअली हमारी बात प्रोडक्ट इसमें हम किसी जो सर्वे कर रहा है ओके ओके so no more question I guess okay now let's have a question okay actually you can As you were talking about the thermal power plant now, so you are correlating it with a BFP, right? Benefit from. yeah We are using we are TDP. talking about motors and motor protection over here. So, as we are using TDPFP, with having 85 to 86% of accuracy and efficiency, right? So, can I ask that IMMR can how contribute to the TDPFP's efficiency? Actually, the short form I am over here. अच्छा 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 Yes, sir. what is the working temperature for this thing So it is president I have to check it will be actually 60 degrees. but when we mount it in our panel That's 60 degrees. It can be up to 60 degrees yeah. Generally, we are having that kind of range only when we are looking at the fan. Maybe fan would be located at such an extreme location, but to 60 degrees, it will be able to more rate, more rating. सर इस रिले में क्या कोई टेम्परेचर का कोई फंक्शन है क्या कोई रोल प्ले करता है क्या क्योंकि जो इनपुट ड्रॉ आउट कंपोनेंट जहाँ पे रहता है आपका बस में जो लगता है जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बाय द वे अगर स्लाइडिंग कॉन्टेंट प्रॉपर नहीं बैठा है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मेल्ट हो जाता है उसकी ना थर्मल मॉनिटरिंग हो पाती है ना की बात कर रहे हैं 11 की बात कर रहे हैं ड्रॉ कॉन्टेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मतलब बस में आप इंसर्ट करते हैं अगर वो कॉन्टेक्ट प्रॉपर नहीं बैठा है या फिर उसका स्लिप हो गया तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और बाहर से नहीं निकलता है ठीक है तो ऐसा कोई है रिले जो उसका थर्मल कंपोनेंट वहाँ पे मेजर करते हैं थर्मल टेम्परेचर वहाँ का मेजर करके एनो कॉन्टेक्ट क्रिएट कर दे मैं समझ गया था वो आप ड्रॉप पैनल की बात कर रहे हैं लाइन कॉन्टैक्ट जब वो बैठे ना क्योंकि वो बाउंड में रहता है इसलिए पता है पानी उतना तो नहीं हमारा जो बंदा होते तो हमें व्यक्ति का कुछ ना टेम्परेचर से आता रहती है व्यक्ति भी ना उसके कारण फेलियर बहुत ज्यादा हाँ है सर बट इसमें आउट कंपोनेंट ग्राउंड ज्यादा प्रेशर पे नहीं मतलब कितना एकदम लेवल पे लोग होता है तो ये दिक्कत होती है मैं होती इसका सोल्यूशन नहीं है अभी तक आने पर वर्क होने पड़ेगी वो आर प्लस सॉल्यूशन है ना आपके पास वो आर्क फ्रेश वाला जो है इस केस को सफाइज करेगा उन केस इन दोस केसेस जहाँ पे लायरा कॉन्टेक्ट बैठा नहीं है ना देयर विल बी अ स्पार्क
So that is an addition to overcurrent protection. सर हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत बार कॉल चलाने की कंडीशन होती है इसमें। नहीं, उसमें क्या है ना, जो पॉइंट सेंसर है दैट जनरेट्स फॉल्स अलार्मिंग, इफ यू यूज द फाइबर सेंसर इट जनरली डोंट प्रोवाइड। एक्चुअली जो आप जो पैनल ऑलरेडी सप्लाई है उसमें लगाना ना फिर वो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है तो कमर्शियल काम वो हमारा डिस्कशन ऑलरेडी है। ओके ओके या got it next now. Yeah, definitely. Sir. Thank you all of you for being a great audience. Thank you. So just a last question. Is this really having a feature of giving the indication that it is faulty? So, Self first feature, that one is requesting editing for already. Thank you, sir. For up next, we have a presentation by Mr. V.C. Vishwakarma sir, former head of O&M at JPL Kannar, on the topic DGA of transformer. We welcome you, sir, on stage. We have also prepared one small presentation for DGA monkeys to the transformer. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पावर स्टेशन में मेरा भी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है कि ट्रांसफार्मर ऐसा एरिया है particularly the electrical meters and the transformer में जो मेंटेन शब्द है या जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम रेगुलेशन में ये निर्माण किया का पता चलता है ट्रांसफार्मर के बारे में उन्हीं लोगों को मालूम रहता है कि समझने के लिए है अभी ज़्यादातर ये लोगों में अवेयरनेस रहती है कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टेशनरी मशीन है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और इसका कुछ नेग्लिजेंसी या इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग की वजह से ट्रांसफार्मर जो फेल हो जाते हैं ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद में फिर उसकी एनालिसिस होती है वो सारे चीज करते हैं डिजाइन करते हैं फिर but transformer is one of the most important machines. And so especially thing which may main short machine method, but one of the most critical electrical equipment जिसकी एक रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसा कि मैं
Transformer doesn't transform. In the digital age, in the this transform in a way that's fine. It's we have to watch it and happen with our learn it. That's all one way of the transformer. But I can be there to have time there. Thinking the destination, it's someone saying this is something. One time they say in the spirit, but it's even you may not so it is not one formally very important for transformer is very important. The transformer where with such ever element है, we see regular managing like other machine that we make a about one which really is the static appeal, while instead of the same we have with the activate to put one way by the way. Events, why it's the fixed time inside. So can we operation machine, which is quite out so many managing. This is something I say, we are going to tell me this excited time. We can take up to 99%. If you do a proper maintenance, you need this person if you have got maintain something. It's a bad news. It's some very attended transmission it's a base reaction. It's a thing that's up. It's a thing it's serious. It's so this is again very data है consumer failure के लिए आप देख रहे हैं बहुत सारे इंटरनेट worldwide expected when it is lighting, this all insulation degradation, energy touch influence, moisture inside, ILR, insulation, leaf connection, that means it's all loading. ये सब मुझे रीजन नहीं देखना चाहिए कहीं लिखे हैं तुम्हें मैं ये नई दिक्कत है क्या मैं मैं स्टार्टिंग में फिर नहीं क्या रहा मुझे दिक्कत आती है और मुझे बहुत कोई कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें लोग देखते हैं what are mentioning the values of ये ट्रांसफर के जो है ये कहते हैं कि एक जो है एक उनका बहुत बड़ा इफेक्ट है एक इज नॉट बाय एनी थिंग क्या है कि ट्रांसफर में भाई चार जो है कि मेंटेन नहीं होता है बिकॉज ऑफ इनके दिमाग में डिमांड इसी ट्रेडिंग इंक्रीज हो जाती है आज से जैसे वो भी है पहले 60% होते हैं 80% हो गया ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम है और ये जो है आज आप इंसान एस्टिमेट है there are 3 types of escape.
Intel, Panel, Physical, Intel. क्या क्या कि कंपनियों का मेंटेनेंस विफल हो जाता है या लोग अवॉइड कर देते हैं या नहीं कर पाते हैं क्योंकि बजट प्रॉब्लम रहती है लाइट एक पर्टिकुलर नीचे दे दे कंपनी को मुझे लाइन करना नहीं करते हम विदेशों में दे जाता है पेमेंट में जो है ना उससे प्रदान नहीं के लिए टाइम नहीं मिलता है कंपनी का मीटिंग में मुझे और कांड और इन प्रोसेसिंग में कैपिटल डिप्रेशन में कंपनी की लाइफ खत्म हो गई ये लाइफ और फैमिली के लिए टेंशन we need to treat and use a company platform between these are the different types of which is one of the flights will have taken from one mechanical issue. Reliability, internal stress, labor accidents, money failure, regulator failure, money buckets, mechanics, tail damage, insulation damage, pipe failure failures, brake failure, machine failure. The failure to the straight data paper energy, maintain them. Animal stress, air inhalation restriction and conductor, all noise by the regulator, cause of long-term overloading, fire, near fire leaks, control splitting, fire burning, loss of feeling, design into this sector. Electrical stress, category indicating that area 4 uses the charging discharge critical and by thermal chemical charge. In what category, finally is chemical charge where English of water, English of oxygen, what of insulation, right, heat of regulation, duty, heat, limit, etc. Those chemicals. Then what is something? I remember the same guy gathered, he said, it's selection of property chances. Really, I can take up something else. Finally, gains in child care electrical assistance, insulate, stop all things, in corona discharges. Then the DC these of content, what are the thing? One thing about it also is the figure the tension is stored in environment, like these are fully in the one thing about that's the highest in the height, which is our best. The consumer matter, life may be born in high, which is connected deeply into the lake. But also, will not put the experience that in the well, thought is not a failure. The basic form will normally divide in the eye with a small purpose. The person eventually repeating from the relatives with measure. In case of sufficiently severe form, three gas will pass to the eye and selecting the gas sensation.
Is everybody hearing me? Have any problems? All problems. Yes. So, by the recommendation was a developer analyzer game should is a transformer failure. But I remember there was a shortcut order and indices. हर पावर स्टेशन में लाइक जैसे जनरेटर के लिए रेटर वगैरह रखते थे जमीन में दोनों साइकिल एक दिन से ट्रांसफर भी श्योर होना चाहिए हर कम से कम एक या दो या तीन पावर स्टेशन मिलकर सिंगल सर्टिफिकेट कैपेसिटी के इनसे ट्रांसफर जाने इस भी इमीडिएटली रिचे इस जोन के थोड़ा नहीं चाहिए क्योंकि ट्रांसफर जो है पर्टिकुलरली हाई कैपेसिटी के ट्रांसफर ट्रांसफर की मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम एक साल लगता है अगर आपका ट्रांसफर फेल हो गया आपकी पावर स्टेशन की वो मशीन जो है जो यूनिट है एक साल के लिए साल है और मैं द्वारा देखता हूँ इसलिए ट्रांसफर की रेगुलर मेंटेन करना बहुत जरूरी है आप इस्तेमाल नहीं किया अगर कहीं से खरीदा है तो पहले तो अपनी साथ को जो है ना इसके लिए असेसमेंट करके आप कोई नहीं से ट्रांसफर दूसरी बात दुनिया के लिए ट्रांसफर की रिवाइवेशन के लिए देना एक बार के लिए इम्पोर्टेंट है तो that line or managing of the there are some international IEEE is a worldwide organization that develops wide and extended of all types of electrical and electronic engineering. The IEEE is 357.107 19 by interpretation of basic generators and multiple. Here starts multiple international project. ASTM has is one of the largest voluntary extended developed organization in the world. It shows up critical extended for material savers systems and sensors. Every year, create our is a worldwide organization doing critical work in the field of high voltage exchanging and trying to exciting and spices. IEC issued international standards in correspondence with ASTM standards. IEC 60579 minor or intermediate electrical experiment service right to the interpretation of developed and key documents. Commandment to the IEC 60475 method of trending. Linking the realized interpretation of birth analysis can be the interpretation of birth analysis is the subject of IEC 605. Usually the Indian standard IEC 9 the 3 day which is not thinking of
Functional sampling, like all the electrical equipment sampling of basic energy battery and real gases. Before analyzing the basic results in iron, they are first tested from the iron. Three basic methods are used. Firstly, in German, we take one method. We are sampling the devices, which is wait, into exception. The best thing of the job is we should principle of love जिनके ले लिया है ऐसे ही रेट के साथ में सेंट्रल इंजेक्शन किया आपने पेट में पूरे रेट के इसके साथ में रेट ले लिया प्रॉब्लम है ये जो है अभी आपका उनका जॉब है हमें इसके तरह से डिफरेंट ढंग है ये बेसिक जो है अभियान कानून वाले क्षेत्र इसके लिए इसके लिए ये देखे से ढंग ये दिक्कत है यहाँ के इंटरनेटर में जो है ना इंटरनेट के बहुत मन नहीं मानने का दिक्कत है तो ये अल्टरनेटिव ये देखे इनकी एक सब ये कौन सी आता है जनरेटर में है तो ये जो ना मान मिलता है और ये आपको मिलता है हर किसी बिजली है तो ये जो है ये आप देख रहे हैं अल्टीमेटली फाइनली बहुत से ये दिखते होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब कैसे जो है कोई बात नहीं है और ये जो आपके दिया हुआ है 20 से कम अक्सर जो है दे रहा हूँ डिसेंटिंग किया है ये कौन सी कौन सी जरूरत है तो आपके फाइबर एनालिसिस के लिए डायग्नोस्टिक के लिए आप उससे यूज करें तो ये जो गैस फॉर्मेशन है गैस फॉर्मेशन कैसे होता है ये वैसे भी oil always results from the decomposition of electrical installation oil or pressure as a result of how or chemical reaction in reaction देखिए how कैसा है oil क्या है oil is the molecule of hydrocarbon containing hydrogen and carbon atoms linked by chemical those chemical one of these bonds will get into this Adium CH3 is the radicals. All these radicals then combine to form the salt ratio designed in ये रेडिकल जो है आप देखते हैं अगर यहाँ रिएन जो है रिएन लाइक पंपा है रिएन सेफ्टी ये अल्टीमेटली ये देते इनमें decomposition of paper powder, air, proteins, and sixteen water. Which, oh, yeah, yeah. ये मैं जल्दी जल्दी से चल रहा हूँ 5 मिनट के लिए लगेगा 3 मिनट हो गए 5 मिनट अरेंज के लिए ओके तो ये जो गैसेज हैं आप सब जो है जैसे नॉर्मली क्या है लिक्विड है जैसे ग्राफ में मान के जैसे ये गैसेज सब सिग्निफिकेंस क्या है अब देखिए each of the time how these gases are present in video always some of one in otherwise it will from the energy content in the graph. For example, low energy forms, what is the cranium pulses which are in blood bodies, or low temperature hot spots, is formed mainly for present and night. What I am looking at
without any thought you related to any regulation that is community related to company. I got high temperature, unnecessarily to have large something, water, it links, it is so sometimes. और हर फाल्ट में आप जाएंगे इंग्लिश मीडियम फाइव हंड्रेड it's a test typical hard large amount basically in farm meeting this is what daily I can get condition change and review I am looking at the serious state of my break in video yes it possible to identify 5 parts out in video तो ये देखिए ये चार्ट में जो है आपको बेसिकली याद ये लगेगा कि with respect to the temperature, ये fault अंदर हो रहा है, heating हो रहा है, sparking हो रहा है, ये किस temperature में इसकी 5 to 10 यूनिट हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये जो वैसे भी, ये हम 55 150 डिग्री केपीए के ये मेरा फाल्ट है जिसका हमने तो टेम्परेचर ये नॉर्मल टेम्परेचर तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है 160 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के था ये बेसिक वाले हैं वैसे ही आपका 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा 160 डिग्री के पूर्व आप जो है हीटिंग डालना चालू हो जाएगी और मीटिंग डालनी शुरू हो जाएगी ये 60 डिग्री टेम्परेचर आप आ रहे हैं इसलिए बढ़ना चालू हो जाएगा आपको गैस एनर्जी में लेकिन सेम का कंटेंट आपको मिलना चालू है इसके बाद में ये किसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इतना कभी जब यहाँ जा रहा है ये जैसे मीथेन है ये जैसे इस क्वांटिटी आपको बढ़ने लगेगी हम उसी एक फोर इनमें ऊपर जो लगेगा हमको ये प्रिपरेशन रेट से नहीं करना है ये किसी डिग्री के ट्यूब में आपकी जो एक नीम वो जो नीम चालू हो जाएगी दोनों में ये सब दर्शक बिल्कुल होती है तो ये आप इसलिए देख रहे हैं ये जो बेसिकली ग्राफ दिया है तो how gases generate with respect to temperature inside the farm ये कितने वैसे partial discharge जो है partial discharge जो है normally आपका जो है ये फ्लेम और मीथेन जनरेट होती है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक starting living primary consumers मेरी मंडी में जो है बहुत बढ़ेगा तो दूसरी फॉल जाएगा हाँ हाँ पर खबर नहीं देखते थे एक केस है ना कुछ नहीं तीन अभी आप कार्ड में देखेंगे 3 केपी एनपी टेम्परेचर आपको 300 डिग्री सेल्सियस से आपका देने पेपर नहीं जाने काफी देखेंगे ये टेम्परेचर है और आप very Indian nutrition के लिए बात करना बेसिकली की समथिंग वही जगह आपसे मिलने लगेगी ये सब आपको कैसे होंगे और ये मेमोरी जो हार्ड बैठे हुए हैं वो उनसे हम तो ग्राफ में देते हैं ये तो कैटेगरी है कैटेगरी में जाते हैं ये सब इंस्टॉलेशन में आएगा तो ये सब आपसे नहीं है ये जो अच्छा ये कार्ड है ये देखेंगे ये दिन ये सब जो जैसे हैं क्या क्या कंडीशन जो है ये जैसे बात से करने वाले होंगे ये एक सीनियर से काम ये जमीन से आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो क्या ये बात बता दी इच्छा की ये जो बहुत सारे जो जैसे उनके जो करते हैं एक हफ्ते कर गए ये ग्रेजुएशन के लिए तो वही चाल क्या नाम ये काम सुनने का इतनी सारी तो हर आइडेंटिफिकेशन जो है इसके लिए भी बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक जैसे क्लास होल्डर समझी जन के दोनों बाद में
तो विदाउट गैसेस के साथ में पूरा नंबर शिफ्ट हो रहा है the degree of polarization is. This is also very important for managers, particularly when consumer gets through that. So 28 one over your head. So normal management from I said consumer mission makes the life short with paper. You need to do this one. If you want to do things like this, the basically you can mean the life of the thing. Those are आपके direction life के लिए देना Itu really try really up Itu really indicate Lima finish in Lima really was to Lima Lima control in the individuals and also in this Lima will by it listen. It is the relation once more. It is the best insulation to insulation the function down with not really the paper insulation that insulated it really. Researcher has received all seconds in time. I simply tell you, it is no. If one machine is also very important. My expectancy going down in the insulating consists of hydrocarbon H relate paper and stadium. Is a function of operating condition with thermal effect or direction. I by central process, steady looking upon looking converted in foreign condition. Half paper needs insulating a DP like moisture. Moisture the area is not able to moisture after most of it is highly dry. You can make the duration insulate the paper in the clear shape then the environment. The silver material becomes over in my favorite plants, with favorite in the fake field. In my sleep, my favorite plants prevent contamination. The moisture in oil. These necessary removed by wind and purchase. The light of paper insulation gets material. This element regularly grows the deep of the shaman. It can become permanent, final, and First, neutral symbols need. This is the normal. Change of intention or a release to be put into the unit. Again, I wish you all the best for successful and I think you will be able to continue. Continue. lot of So teams are delegates are requested to head towards the content. Rest other participants see the second year. 15 minutes. 15 minutes.
Let's resume our session with a presentation by Mr. Subramanic sir, OEM at Siemens. We welcome you, sir. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I'm Subramanic. I came from Siemens Raipur. अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक्चुअली मीडियम में जो फीडबैक होता है इसका आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस हम लोग देखते हैं। इसके ऊपर हमारा कुछ प्रोडक्ट भी है, इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। तो सेफ्टी रिलेटेड आज का जो टॉपिक था, इसमें बहुत सारे बच्चे पहले बोल चुका है, बाद में बोलेंगे भी। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त मतलब आप ये कॉन्फ्रेंस में इतना ज़्यादा वक्त ही नहीं है। हेलो हेलो, अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, तो इतना वक्त नहीं है, तो मैं शॉर्टली डिस्कस करता हूँ। आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें रहेगा, आप लोग बाद में या कॉन्फ्रेंस के बाद में बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और हमारा कंपनी की तरफ से जो स्पीच भी देना चाहता हूँ। तो अभी शुरू करता हूँ हमारा टॉपिक से ऊपर। तो हम लोग एक्चुअली क्या है, जो सेफ्टी के ऊपर प्लांट में या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में जिन लोग काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशर सेफ्टी मेंटेन करने के लिए प्रेशर ज़्यादा रहता है और ये होना भी चाहिए। और बहुत सी जगह मैंने देखा हूँ इधर काम करते हुए, छोटा मोटा जो कंपनियां रहता है इधर, तो इसमें क्या है, उन लोग पैसे बचाने के चक्कर में साल भर में एक बार भी प्लांट का मेंटेनेंस नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते। तो इसमें क्या होता है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मगर जिंदाल जैसे कंपनी में या बड़ा बड़ा जो कंपनी है इधर, इधर प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह ये सब होता रहता है। आप लोगों को पता है, आप लोग इधर भी करते होंगे। तो उसके लिए हमारा भी कुछ जो जो हम सपोर्ट कर सकते हैं आप लोगों को, जो प्रोडक्ट से आप लोगों का प्लान का मेंटेनेंस सही तरीके से चल पाए, ऐसा अगर सपोर्ट हम दे सकते हैं तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा अभी। हम जो हम लोग देते हैं नॉर्मली कस्टमर को और सजेस्ट भी करते हैं कि फ्यूचर बेटरमेंट के लिए। तो पहले है एसिड कंडीशनिंग मॉनिटरिंग एनालिसिस वन की, ये कंडीशनिंग मॉनिटरिंग है। इसमें मीडियम वोल्टेज में जो फीडबैक रहता है, डिस्प्ले चैनल वगैरह जो होता है, इसका असेसमेंट कंडीशनिंग मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, मीडियम वोल्टेज जो फीडबैक रहता है, अ, इसमें अगर कुछ फॉल्ट या प्रॉब्लम आएगा तो उसमें जाके देखना पड़ता है कि कहाँ पे आया है, उसको मतलब सॉर्ट आउट करना पड़ता है, सबस्टेशन को मतलब वो पैनल को बंद करके। तो इसमें वक्त भी जाता है, मेहनत भी लगता है, रिस्क रहता है बहुत सा। तो इसको अवॉइड करने के लिए और प्रॉपर प्लानिंग पहले से अगर कस्टमर ले पाएंगे तो आगे चल के उनका ही हेल्प होगा, वो प्रोडक्शन को भी बचा पाएंगे और अपना जो समस्याएं है इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और इसके साथ है ये आपका कंडीशनिंग मॉनिटरिंग, इसके सब है। इसके साथ पैनल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, पैनल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये ब्रेकर का जो हेल्थ कंडीशन है वो बताते रहते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्रेकिंग इन ब्रेकिंग आउट डिवाइस है, ह्यूमिडिफायर है। अभी यही तीनों टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस करूंगा, क्योंकि जो जो टॉपिक और भी है वो
मतलब बोलने जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये पेज में लाके दीजिए ना। ये और फाइबर सिक्योरिटी का काम भी हम लोग करते हैं। इट्स हाई वोल्टेज में सारा अपग्रेडेशन से लिए। हेलो हेलो। अच्छा। हेलो। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। हाँ ये है लिनक्स पे मॉनिटर। इसमें एसेट ट्रांसपेरेंसी, एनर्जी मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस, ऑपरेशन ट्रांसपेरेंसी और वो स्टेटस पे हम लोग चेक करते हैं। वो इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग और लिनक्स पे मॉनिटर में ये है कि हम लोग डिजिटलाइजेशन सेक्टर सपोर्ट होता है कस्टमर्स लोगों को। जैसे मान लीजिए आपके कोई प्लांट या डिविजन में बहुत सारे मीडियम वोल्टेज के यूजर्स है, तो उनको उनका हेल्थ के बारे में, हेल्थ कंडीशन के बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी रखने के लिए हम लोग लिनक्स पे मॉनिटर पे सजेस्ट करते हैं कि उसमें वीआर, ट्रिपल कॉइल, क्लोबल कॉइल, सिस्टम मोटर, वीआर बैच जो भी है उसका हेल्थ स्टेटस के बारे में अपडेट देते रहेगा। इसके साथ बता नेक्स्ट पेज में जाइए। हाँ इसमें आप देख सकते हैं वो लिनक्स पे मॉनिटर पे कैसे काम कराते हैं। इसमें बागबाग में अलग अलग बागबाग चैम्बर में ये हम लोग सेंसर लगाते हैं सिटी के थ्रू। जैसे का जो शीपिंग कॉयल, कूलिंग कॉयल, मोटर वगैरह रहता है, इसका सप्लाई को हम सिटी के पास कराते हैं। उसके बाद हम लोग एक सेंट्रल पॉइंट पर लाके ये सब डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये डाटा को एनालिसिस होता है कि अगर मान लीजिए बिजली में कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए शीपिंग कॉयल, कूलिंग कॉयल का हालत खराब हो रहा है, आपको पहले से ही जानकारी मिलेगा कि इसका हेल्थ कंडीशन बहुत खराब चल रहा है। रेजिस्टेंस और वर्तन बढ़ जाएगा, तब आपको डिस्प्ले में उसका बिल्कुल मिल जाएगा। आप अगर क्लाउड में लेना चाहते हैं या रिमोटली उसको अपलोड करना चाहते हैं, तो घर बैठ के आपका अपना कंप्यूटर में या फोन पे भी आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। उधर मतलब प्लान में विजिट करने का भी जरूरत नहीं पड़े। नॉर्मली क्या होता है, अगर प्लान में कोई फॉल्ट आता है तो सब लोग जाते हैं वो जितना वो पैनल है उसको शट डाउन देते हैं। उसके बाद चेकिंग करते हैं कि उसमें फॉल्ट क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है। उसके बाद जाके उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। फिर आप लोगों को जाना ही नहीं पड़ेगा, मैं आप बैठ तो बैठ के ही पूरा बात मतलब पूरा जो प्रॉब्लम आया है तो इसके बारे में पता कर सकते हो। जैसे बागवान में अगर कुछ फॉल्ट होता है तो सेंसर से आपको पता चल जाएगा, पर्शियल डिस्पैच वगैरह जो भी है वो समस्या आएगा उसके बारे में पता चल जाएगा। और आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को भी सेंस करेगा ये सेंसर, तो टेम्परेचर भी रहेगा। तो और ये बिजली का जो स्टेटस वो भी बताते रहेगा। तो अगर मान लीजिए किसी स्पेयर्स का जरूरत पड़ेगा तो आप पहले से ही उसका जानकारी मिल जाएगा आपको। आप इसके हिसाब से प्लान बना के स्पेयर्स वो लेना चाहिए वो ले सकते हैं पहले तो लेके, मतलब अचानक कोई एक्सीडेंट की संभावना से पहले ही आप तैयार रह सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। ये कैसे कैसे हमने कौन सा बैठा था, इसका एक फोटो वगैरह हमने किया है इसमें। आप देख सकते हैं सेंसर को केबिल चेम्बर में, जो बागबाग चेम्बर में हम लोग बैठाए हुए हैं। तो नेक्स्ट में आई और ये हेल्थ स्टेटस का इंडिकेशन कैसा रहेगा। जैसे होल्डी कंडीशन में ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल देगा। उसके बाद जब होल्डीनेस का गिर जाएगा तब येलो और एकदम मतलब खराब हो जाएगा तब रेड सिग्नल होगा। तो आपको सिग्नल भी पता चल जाएगा कि ये कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और आपको क्या करना चाहिए। तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम में नहीं फंसना पड़ेंगे कि अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाता है या फ्लैश ओवर हो जाता है तब क्या होता है कि फैन भी बंद करना पड़ता है और लोगों के ऊपर दबाव भी बढ़ जाता है, प्रेशर भी आ जाता है। तो तब जनरल की मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक स्पेयर से अगर लगेगा तो उसको खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, पीआर बनाने के लिए जो भी है, जो भी फॉर्मेलिटी रहता होती है उसको पूरा करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। तो उतना जल्दी सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेयर्स कुछ लोग रखते हैं अपने लिए,
तो अगर पहले से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आप लोग भी ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। ये भी उसका ही है सप्ताह पे, ये बुआई बेकर के लिए है कि कहाँ कहाँ पे सेंसर को फिट करते हैं, क्या क्या होता है, इसका डिटेल दिया हुआ है उसमें। और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है, वो देखिए ये ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कौन सा डाटा है, इधर ये टेम्परेचर कौन सा है, ये अलग अलग सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी सेम है, इसमें ये कलर की चीज है, ये कहीं पे डाटा टाइप दिया ये सब है। नेक्स्ट यह पैनल मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि मैंने मॉनिटर और कंडीशन मॉनिटरिंग के बारे में, उसके थ्रू हम लोग आप लोग घर में बैठ के पूरा पैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक साथ कॉम्पैक्ट सिस्टम रहता है, उसमें स्काडा के थ्रू आपका मॉनिटर मिल जाएगा कंप्यूटर बेस पे। तो ये है पैनल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसका काम सिर्फ डेटा का एनालिसिस करेगी, मतलब डेटा में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, फॉल्ट होगा, तो इसके बारे में हम लोग पैनल मॉनिटरिंग से जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग पैनल मॉनिटरिंग रखना पड़ता है, क्योंकि एक पैनल मॉनिटरिंग सिस्टम से पूरा अगर मान लीजिए 10-12 एक साथ है, पैनल जो भी है, तो उसमें डेटा को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग डेटा में अलग अलग पैनल मॉनिटरिंग सिस्टम को बैठना पड़ेगा। मगर कंडीशन मॉनिटरिंग और एनएक्सपी मॉनिटर के लिए आप एक सिस्टम पूरा चलेगा जिसमें आपका जितना पैनल है सबको लेके स्काडा में पूरा डेटा आएगा, और डेटा के थ्रू आपको जानकारी मिलेगा। उसमें आपका बाजार का भी जो समस्या है, ये प्रॉब्लम है, उसका भी डिटेल आएगा। और आप क्लाउड में भी लेके या आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके जो भी है आप दूर से भी उसको अपलोड कर सकते हैं। मगर पैनल मॉनिटरिंग में सिर्फ आप डेटा का ही जानकारी ले सकते हैं, हेल्थ स्टेटस ले सकते हैं, और वो पैनल के साथ जुड़ा रहेगा। आपको अगर देखना है तो पैनल के सामने जाके उसका डिस्प्ले चेक करके देखना पड़ेगा कि वोटर का हेल्थ कंडीशन कैसा है। आप इसको दूर से अपलोड नहीं कर पाएंगे। दोनों डिफरेंस है कंडीशन मॉनिटरिंग और पैनल मॉनिटर के बीच। उसके बाद आइए, ये IRR भी है, डिवाइस जिसको हम बोलते हैं। आप लोग आप लोग जानते हैं, नहीं नेक्स्ट तो आप लोग जानते हैं कि बसरी को हम लोग मैनुअली अपलोड करते हैं, पैनल को वहाँ पे बाहर निकालते हैं, अंदर लेके जाते हैं। कोई लेकर में आता है, पुराना दवा जमाना का ब्रोकर है, इसको खींचना पड़ता था, खींच के बाहर लाना पड़ता था, नंबर निकलना पड़ता था। तो अभी हम लोग जो नया सिस्टम लाए हैं, हाउस जो है, वो आप खुद से ही डेटा को अपलोड कर पाएंगे इस तरीके से। मगर क्यों इसका जरूरत है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी एक फोटोग्राफ है, ये वेटर का फोटो है। उसके बाद स्पेस है, इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है, और उसके बाद आसपास प्रोडक्शन बाउंडर में। तो जब हम लोग डेटा को रैकिंग और रैकआउट करता है हम लोग, तो हम लोग तो सप्लाई डायरेक्ट करके ही करता है, हम लोग बास्केट में थोड़ा बहुत चार्ज बढ़ जाता है, इसके चलते एक्सीडेंट भी हो सकता है और होता भी है। नॉर्मली ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल पहले को लाना पड़ेगा, जाके बोतल को बैठे जाते हो होना पड़ेगा। ये तो होता नहीं है, बहुत जगह नहीं रहता, तो एक्सीडेंट का एक चांसेस भी बढ़ जाता है यातायात के टाइम। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग आईआरबी की सजेस्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पेज पे जाइए, आप देख सकते हैं कि आईआरबी को ये डेटा के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद दूर से अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो भी है हमारे पास, और डेटा इसको समझा सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो 3.5 मीटर का जो 8 बाउंड्री होते हैं, तो उससे
उससे दूर से हम लोग अपलोड कर सकते हैं। वर्ड वर्जन भी होता है आईआरबी का और वाला वर्जन भी होता है। तो वर्ड वर्जन में 10 मीटर दूरी से आप अपलोड कर सकते हैं वो करके, और वायरलेस वर्जन में आप 20 मीटर दूरी से आपका फोन से या टैब से आप अपलोड कर सकते हो। इतने नीचे में ही एक लगा रहता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें प्रोग्राम सेट करके टैग वगैरह सब सेट करके इसको नोट कराना पड़ता है। इसको लेकर के साथ जोड़ के हम लोग अपलोड करते हैं से, तो लेकर आके आप होते हैं हो जाते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ बिजली के लिए हम लोग देते थे आईआरबी, अभी ये सभी के लिए भी हम लोग देना चालू किए। तो सभी के लिए भी हम लोग दे सकते हैं आईआरबी नोट से अपलोड करने के लिए। और इसका वेट होता है अप्रोक्स 1 है, और इसका सिस्टम वोल्टेज 440 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पेज में आइए, ये सब आईआरबी का फोटो है। नेक्स्ट पेज, ये हम लोग दिखाया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीसीबी हम लोग जो यूज किया है आईआरबी पे, इसका एक डिटेल है इसमें। नेक्स्ट पेज में आइए, आईआरबी का सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है यूजर पे, इसका डिटेल है उसमें कि कैसे हम लोग अपलोड करते हैं। नेक्स्ट पेज, ये कैसे आईआरबी को जो बीसीबी को रैकिंग आउट किया जाता है, इसका एक फिगर दिया था उसमें। ये मैप पे देकर के जो मैप होता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है और बोर्ड से लेकर के हम लोग अपलोड करते हैं आईआरबी के थ्रू। यह इसके बाद आता है डोमेन यहाँ पे, तो डोमेन का एक्चुअली हम लोग देखे हैं स्पेशली मॉनसून पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो उसके चलते क्या होता है, पानी के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो मॉइस्चर भी आएगा, और बाहर से भी आता है, जिधर कोल माइंस है उधर से बहुत मॉइस्चर रहता है। उसका इफेक्ट पैनल में भी पड़ता है, कूलिंग चैम्बर में ज्यादा पड़ता है, फ्रेश फ्लैश चिप ये सब होने का संभावना भी बढ़ जाता है। तो पहले हीटर से ही तो लोग काम चला लेते थे, उसके बाद भी प्रॉब्लम आता था, इसलिए हम लोग देख नहीं चल पाया, जिसको कस्टमर्स के लिए सजेस्ट कर रहे हैं और हम लोग इसको इनोवेट किए हैं। ये इसमें आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर भी रहता है। एक को भी मीटर के लिए हम लोग एक ह्यूमिडिफायर को सजेस्ट करते हैं। केबल चैम्बर के अंदर दूसरे पैनल में केबल चैम्बर के अंदर ह्यूमिडिफायर को हम लोग बैठे थे, और इसमें आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा रहता है और एक डिस्प्ले रहता है। नेक्स्ट पेज में आइए, हाँ एक डिस्प्ले भी रहता है। देखिए, फिर डिस्प्ले के थ्रू आपको पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी लेवल और टेम्परेचर लेवल क्या है, उसमें रहने। तो ये देख सकते हैं, तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है, तो एक्सपोजिटर है, और ये ह्यूमिडिफायर मॉड्यूल है, इसको हम केबल चैम्बर के अंदर बैठाते हैं। ये ज्यादा बना नहीं है, छोटा है, और इसके अंदर एक पंखा लगा रहता है, स्टीम होता है, एक फ्रीजर बोर्ड टाइप का रहता है। केबल चैम्बर के अंदर के जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को ये खींच लेते हैं, सक करता है, और इसके अंदर जो आपका हिस्टिंग रहता है, हिस्टिंग में कोल्ड हिस्टिंग होता है, इसके साथ एक मॉड्यूल जुड़ा रहता है जो हिस्टिंग को ठंडा करते हैं। तो ठंडी प्लेट को निकालने के बाद वो हवा एक ड्रॉपलेट बन के रिजर्वॉयर में कलेक्ट हो जाता है, और ये रिजर्वॉयर के साथ जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है होता है, इसके चलते इसका जो पानी है बाहर निकाल के हम लोग फेंक देते हैं। तो अंदर का जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को हम लोग ऐसे कंट्रोल करते हैं, और गर्म हवा भी छोड़ देता है ऊपर ऊपर ताकि कंट्रोल हो जाए। इसमें हम लोग 50% करके नॉर्मली सेट करते हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर लेवल। वैसे 50% से ज्यादा हो जाएगा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर लेवल, तो आपको आप काम करना चालू कर देंगे जो ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल में लाए। ये आपका अगर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के प्रॉब्लम ज्यादा है तो भी हम लोग देखा है, मगर छत्तीसगढ़ में आके मैंने देखा है, अगर हर सी जगह नॉर्मल एलजी वैसे
उन्होंने भी लोग कूलर लगा के इसको ठंडा कर रहे हैं। तो कूलर से क्या होता है, पानी निकालते हैं, इसके चलते आपका लॉक्स वगैरह इसमें से मॉइस्चर भी आ जाता है और डस्ट पार्टिकल्स भी हो जाते हैं। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, जिसको आप सभी जगह यूज कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है कम्युनिटी का, सिर्फ एसी पैनल में हो सकता है, एलईडी पैनल में हो सकता है, ट्रांसफार्मर मोटर जो भी है, वहाँ के हो सकता है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आइए। हाँ, तो इसका फोटो आप देख सकते हो, ह्यूमिडिफायर कैसे काम करता है, इसमें डिटेल है कैसे क्या है। आप ये मॉइस्चर का इफेक्ट देख सकते हैं कि इसका भी एक फोटो हम लोग अटैच करके दिया है इसके साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट। और इसके अलावा हम लोग खाना सर्वर सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। आप लोगों को पता है कि इंडियन रूल्स के मुताबिक अभी सर्वर सिक्योरिटी मैंडेटरी हो गया है, तो हम लोग सर्वर सिक्योरिटी एप्लीकेशन इसका भी काम करते हैं। नेक्स्ट, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप बाद में बात कर सकते हैं। एक्चुअली शॉर्ट टाइम था, मैंने प्रिपेयर कहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने मैंने क्या ना, ये अभी बोलने के समय एडजस्ट नहीं कर पा रहा था कि कितना वक्त लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को अगर कुछ ये लगे कि तो बाद में बात कर सकते हो इसके बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये नहीं, ये बाद में भी डिस्कशन हो सकता है। यस, इसमें है पीपीटी में हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, यस यस। हाँ हाँ, थैंक Thank you, sir, for such a valuable information. Next up, I would like to call Mr. Arun Narayan, sir, and Mr. Atish Kumar, sir, from JPL Angul. Please, sir. ओके ना। Good morning, everybody. Respected Prajapati sir, Singh sir, and Vishkarma ji. Vishkarma ji के साथ I just worked in Cobra for a certain period of time, and my colleagues in Jindal and children, and of course the man of the moment, Sanjeev sir. We are doing one. You are doing a wonderful job, and the JIP is lively. I am on roll of JIP, but this is the first time I'm coming here after almost 1.5 years, because I was given some other assignment. And I started with, after my superannuation, I was told to go to Dhule station, that Jindal has acquired that plant, and I was given the task of reviving it. So just as a brief, the revival of plant, because it was lying idle for more than 7 years. You don't know anything about the equipment. You don't have the backup of OEM.
you don't have any documents, you yourself have to decide by testing the equipment whether that equipment is we can put in service, whether it will give the line. Just as if a person goes to the doctor and he says, you just test me whether you check me whether I am healthy or not. डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर पहले तो फिजिकली चेक करेगा, he will come to some conclusion, वो बीपी वगैरह चेक करेगा, then he will do some test, preliminary test करेगा. After that, he will conclude whether the test is okay and the person is healthy or not. And if he find any deviation in the test, he will go to another level of test. That is basically what we are doing. So this is my first plan. Sir, I will take some time. Okay. Yes, sir. First slide. Ah, this one. First slide. Jeep. Presentation Jeep. Ah, this one. Gule, we have 150 megawatt, 2 units, and that is the generator is air cooled. And ACPC2, we have 2 units of 525 megawatt. Generator is hydrogen and the stator is water cooled. Next. Yeah. Sir, the power evacuation is through 220 kV system. Generator voltage is 15.75 kV. And we have transmission line JPL Gule Amelnet 220 kV double circuit. And then isolator, we have a center break isolator of Siemens make. GTSC UT in a row with BCD. ST 6.6 kV system and battery, we have a lead acid flood tester. Now we can see the history. All electrical elements of unit 1 were commissioned. Unit was taken on load. Unit 2, only erection of the electrical equipment, they have done it. And it is idle for 6 to 7 years without any maintenance. Okay. So our key elements, how to start with. The first thing we have to see, after DC system, we must have a DC system in service. So the battery hai, battery no maintenance done. So I started with reviving the battery. We checked the battery. It was giving 75% capacity. So we have 2 banks. The second bank, it was giving 40 to 45% capacity. So we just found which are the batteries which are good, and we made 1 bank. Because the thing is that if you go for the replacement of a new battery, then the lead time is almost 7 to 8 months. That is not viable. Whatever equipment we have in our hand, that equipment we have to revive it, because ये time ज़्यादा देता नहीं है. People will be behind you. आपको जल्दी से करने के लिए बोलेगा. So you, whatever equipment is available, it is under you. You have to decide whether this equipment will work or not. So it is your decision. Nobody is coming from the top and say whether this equipment is running or not. So revival is one thing where you yourself has to decide whether the equipment is okay or not, whether we can revive it or not, whether, and considering the safety of the personnel and the safety of the equipment, we have to decide whether this
system is workable or not, whether we can put in service or not. So first we revived one battery bank and charger, and we started with the battery system, DC system. Then second, what we have to do, we have to get the DG set in service, because for emergency, any emergency, we must have the DG system. But the DG system is always it's already in service there, so we did not bother much about the DG set. Then we need the electrical protections in service. All electrical protection must be service, because any equipment we cannot start without the protection. So that system also is very important. And fire system must be ready, so that in case of any fire, we can use the system to quench this thing, fire. If these three important aspects, if you revive it, then the balance of the system will come automatic. So switchgears and circuit breakers, transformers and fire station, AC and DC motor, switchyard electrical element, generator and external system. Now, switchyard जो है हमारा, it is controlled by SCB's utility. तो वो ये बोलता है कि भाई आप अपना टेस्ट करना है, पूरा इलेक्ट्रिकल टेस्ट करना है, then only they will allow us to charge the system. तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं. What we do the normal test, normal routine test. उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, the system is ready. But sometimes they insist नहीं, you go for the high voltage test also. Then उधर पर argument होता है, why you require a high voltage test? I will not do it. But they will say कि भाई ठीक है, नहीं करोगे, हम पास नहीं करेंगे. That is basically, तो उनको समझाना पड़ता है, even if we keep a spare CT, we do only the routine test. Spare CT, it is not necessary that we can use it, that it will come into use within a year or two. Maybe the CT we use after 5 years, 6 years, 7 years. We only do the routine test. वो बोलता है कि हम नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे. Then money matters. उसको पैसा चाहिए. सिंपल रीजन है, पैसा चाहिए. यूटिलिटी को पैसा चाहिए. Then somehow एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आता है कि ठीक है, हम कुछ अमाउंट दे देते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं. दैट कम्स. उनको इफ यू टॉक टू टेक्निकली, दे डोंट एग्री टू इट. टेक्निकली उन लोग सुनना नहीं चाहते. एवरी टाइम दे थिंक ऑफ कि हम जो बोलेंगे वो सही है. इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद द SCB's utilities. बहुत मुश्किल होता है. They don't give the clearance. It becomes very difficult. We have to engage so many agencies for this to get the clearances. The same is with Angul. So somehow we managed it, we got it, and some of the major issues what we encountered in Dhule, that I just briefly explained to you. Unit 2 Y-phase GT bushings. इसका क्या हुआ था? The testing they conducted before I joined, and testing, I just reviewed the testing reports. उसमें everything was okay. Then we were about to charge. उस period में क्या है कि I made a visual inspection. Visual inspection में क्या हुआ कि जो bushing है, उसका जो लेवल गेजेस हैं, जो आपका लेवल दिखा था ऑयल का, वो लेवल गेजेस थोड़ा सा हेजी था. ठीक है, थोड़ा सा हेजी था. एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम द बॉटम, you will find that is the level is okay. Even I had seen that level was okay. But I made visual inspection by मतलब ट्रांसफॉर्मर के ऊपर चढ़ के देखा, तो एक छोटा सा जगह पर they applied पुट्टी, एक स्मॉल जगह पे अप्लाई पुट्टी. दैट डेफिनेटली मेड मी, पुट्टी अगर लगाया है तो देयर मस्ट बी सम लीकेज.
अब वो लीकेज क्या है? नाउ tomorrow we have to just day before next day we have to charge it. No, I told कि नहीं, we cannot charge it. तो I thought चलो एक बार थोड़ा सा ऑयल डाल के देखते हैं ऊपर से. When we put the oil, तो नीचे जो पुट्टी है it started wet होना चालू हुआ. Means there is no oil because you don't find the traces there. क्योंकि it was whatever leakage had happened, it happened around say 5-6 years. तो over a period of time बारिश हुआ, गर्मी हुआ, ठंडी हुआ, वो सब निकल गया. तो लीकेज भी कुड नॉट फाइंड आउट. बट एक पुट्टी लगा हुआ था, वो पुट्टी जो है उसमें जब हमने भरा तो इट स्टार्टेड माने वेट हो गया. दैट मीन्स देयर वाज अ लीकेज एंड इट इज एम्प्टी. वी जस्ट अवॉइडेड दैट फ्लैश ओवर. ठीक है. देन वी आस्क्ड स्पेयर सिटी फ्रॉम तमनार. तमनार में सिटी आपने भेजा था. ठीक है. बट सिटी जो है दैट इज ऑफ स्टेशन ट्रांसफार्मर का था. एंड उसमें एक प्रॉब्लम था कि जो बीसीटी है सर, बीसीटी 300 mm था, वेर वी रिक्वायर्ड 600 mm. दैट इज ऑल्सो लर्निंग. ठीक है. आपका 3 सिटीज था, हमारे इधर 5 सिटीज था. दैट इज ऑल्सो लर्निंग. बट हमने उसको लगाया नहीं है. देन वी एनक्वायर्ड बिकॉज ओआईपी बुशिंग कोई मैन्युफैक्चर वैसे करता नहीं है until and unless we give orders. बट somehow एक आरआईपी बुशिंग हमारा जो बड़ोड़ा में था उसको हमने पढ़ाया. दैट ही प्रिपेयर्ड दैट माने ही मैन्युफैक्चर, इट इज अंडर मैन्युफैक्चरिंग एंड दे आर गोइंग टू सप्लाई टू सम अदर प्लांट. तो उसको मैंने करके उसको डाइवर्ट करवाया इधर. तो विद इन 1 month वी कुड चार्ज द ट्रांसफॉर्मर. दैट दिस इज अ लर्निंग. ठीक है. सेकंड काम है then unit 1 GT-DJ. इसका एक इशू आया था जब when we because we have done a lot of work in Dhule and when the D-Day comes कि हमको यूनिट सिंक्रोनाइज हो रहा है, लोड हो रहा है, within I think 5-6 days we tested the oil and there was a DJ का deviation आ गया. ठीक है. It is not a question how to solve it. It is a question we have to answer कि इतना दिन के बाद जब हम यूनिट लेके आ रहे हैं, why that DJ has come. ठीक है. But somehow क्या है कि it was in rainy season. We waited for some more time. वो ethane and ethylene बढ़ गया था. We could recognize the problem and बारिश का टाइम था, so we covered all the transformer completely. And we did an internal inspection that yoke का जो earthing है, we found that was loose and that was sparking. उसमें blackish mark भी था. So this is how we rectified unit 1. Unit 1 generator winding temperature on higher side. It is a air cooled machine and at full load it was rising to 130 degrees centigrade. But similar machines जहां पर देखा तो उधर पर it was going maximum up to 105 degrees centigrade. When we talk to the manufacturer जो ये it is supplied by Hyderabad, तो उनसे बात किया, no issue, it is F class insulation, we can go up to 30-35, no issue. But when one machine is operating at 105 on full load, why this machine at full load it is going to 132 degrees centigrade? That is the question. कुछ तो प्रॉब्लम है. Some problem is there. तो जो डिजाइन में है we have 6 coolers. तो उसमें जो full load के लिए we require only 5 coolers. And still the 6 cooler were also in service. Still we are not able to maintain the temperature. तो उसका हम लोग ने इशू सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए we thought maybe that कूलर चोक होगा, बिकॉज उसको पूरा कूलर को हमने खोल के देखा क्योंकि इट इज डीएम प्लांट था, डीएम प्लांट मतलब डीएम वाटर था.
So there is no scaling. But lastly, what we found, उसका जो वेंट पाइप है, दो का वेंट पाइप चोक था. तो देयर वाज नॉट, इट वाज नॉट एक्सचेंजिंग. आप वाटर को कूलर से एक्सचेंज करने के लिए आपका जो है ये पूरा क्लियर होना चाहिए. तो कूलर के ऊपर का जो वेंट है, इट वाज ब्लॉक, तो एयर लॉक हो गया. तो दैट टू कूलर्स दैट वाज नॉट टेकिंग पार्ट इन द कूलिंग प्रोसेस. जब हमने उसको ठीक किया, देन इट अटेन द टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेंटीग्रेड. सिमिलरली वी इसको देखे यूनिट 2 का भी हमने पहले से कर दिया. दैट वी फाउंड 3 कूलर्स चोक जो वेंट पाइप है. दैट इज हाउ वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. देन आइसोलेट अ कॉन्टैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग सीआरएम. हमको सीआरएम बहुत ज्यादा मिल रहा था. इट इज अ सीमेंस डिजाइन. तो उसमें जो कॉन्टैक्ट है, इट इज जस्ट लाइक जो हम लोग जनरेटर और एक्साइटर का जो कॉन्टैक्ट है ना सर, जनरेटर एक्साइटर का जो कॉन्टैक्ट है मेल एंड फीमेल, वो बैंड्स रहता है ना, मल्टी कॉन्टैक्ट बैंड, उस टाइप का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है इधर. ठीक है, डेफिनेटली दैट इज नॉट फॉर, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मूवमेंट. ठीक है, वो फिक्स रहेगा, इट इज ओके. वो हम लोगों ने रिप्लेस किया था विथ सम लोकल पार्टीज, उसको किया था. दैट वी रिजॉल्व इट. देन ट्रिप कॉइल स्विचयार्ड में दे सेड कि एवरीथिंग इज ओके, एंड विथ एवरी प्रोटेक्शन दे चेक्ड एंड एवरीथिंग वाज फाइन, एवरी ब्रेकर इट वाज फिटिंग. बट हमने इसको बोला है कि आप एक ट्रिप कॉइल से चेक करिए, एक ट्रिप कॉइल को बाईपास करिए. ठीक है, हर ट्रिप कॉइल में देखना है. We found 6 of the trip coils were in damaged condition. That also we resolved it. And motor vibration was a major issue at Dhule. इसका 2-3 reasons है. एक तो soft foot का issue है, and second, foundation was a major issue. That foundation also हमने उसको rectify किया, and we could solve this problem. एक unit 2 cooler bank था, जो प्रजापति साहब को ही पता था. उस टाइम ही वाज देयर फॉर यूनिट 2 COD. आफ्टर 24 hours ऑफ COD ऑपरेशन, सडनली दैट यूनिट GT2 का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया. एंड आई यूज्ड टू कम इन द नाइट शिफ्ट, and I was just having a sleep nap. Immediately the person called कि there is a rise in temperature. The main issue that वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसके कारण ऑयल का लेवल बढ़ गया. एंड ऑयल का लेवल इतना बढ़ गया, इट वाज अबाउट टू ऑपरेट दैट PRV. इट वाज अबाउट टू ऑपरेट दैट PRV. 24 आवर्स का जो हमने फ्यूल वेस्ट किया, दैट माइट हैव गॉन यूजलेस. इमीडिएटली हमने क्या किया, उनको बोला कि पहले तो इसको ड्रेन करो, इसको सेव करो, आपका जो PRV ऑपरेट हो जाएगा. एंड इट वाज अबाउट टू ऑपरेट, क्योंकि आपका जो लेवल इतना बढ़ गया था कि इट वाज अबाउट, उसको आपने कुछ नहीं देखा, यू ड्रेन इट, डब्बे में ड्रेन नहीं किया. एंड फिर आफ्टर दैट इमीडिएटली वी ब्रॉट अ ड्रम एंड स्लोली वी रिड्यूस द ऑयल लेवल. पर उसका क्या है, एक कूलर उसका बंद हो गया, एक बैंक बंद हो गया. एंड थोड़ा सा हम लोग भी डर रहे थे कि अगर उसको बैंक को चालू करेंगे, देयर विल बी अ वाइब्रेशन, कुछ होगा, ऑपरेट हो जाएगा. तो व्हाट वी डिड, ठीक है, हम लोगों ने वो कूलर को बंद ही रखा, एंड वी स्टार्टेड कूलिंग एक्सटर्नली. एक्सटर्नली कूल किया, उसमें पानी से फेडर में हम लोगों ने बोर बांध के कूल किया, एंड वी पुट एक्स्ट्रा फैंस, एंड द टेम्परेचर डिड नॉट गो मोर देन 80 डिग्री. एंड नाइट में इट हैज कम डाउन. एंड सर है, वी कंप्लीटेड द COD. सर वाज देयर, एंड द मैन बिहाइंड दैट यूनिट 2 COD इज प्रजापति सर. ठीक है, तो हम लोग ने उस टाइप से फिर क्या है कि वी क्लियरेंसेस मिला, हम लोग को यूनिट चलाने का क्लियरेंस मिला. वी अभी क्या है कि ओपन
open access में we are selling our energy and it is running very smoothly. ठीक है. Now ACPP2, the power vacation is through 400 kV. Generator voltage 21 kV. ACPP में 4 लाइन्स है. At one is ACPP GSPL 400 kV double circuit line. Second is ACPP2 Kulpada 400 kV double circuit. Isolator horizontal double break isolator है. HT we have 11 kV and 6.6 kV system. 11 kV MDVFP के लिए. And battery lead acid plant acids. ठीक है. इसका जो हिस्ट्री है, ओनली सिविल वर्क कंप्लीटेड है. यूनिट 2 में सिविल वर्क इनकम्प्लीट है. मेजर इशू इसका जो है मटेरियल स्टोरेज है एंड इट इज लाइंग आइडल फॉर मोर देन 11-12 years. इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे जो कि हम लोग ने खोद के निकाला है. ठीक है. स्विच गैस, जितने स्विच गैस है, इट वॉज लाइंग आउटसाइड. फरीदा इज देयर, इट वॉज लाइंग आउटसाइड एंड उसमें जितने भी जो है पार्ट्स है रस्टेड हो गए हैं. उस रस्टेड को पार्ट्स को निकाल के धीरे धीरे एंड इट इज द होल टीम वर्क टायरसली टू रिवाइव द स्विच गैस ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो GT, UT ये सब नया ट्रांसफॉर्मर्स है. एंड हियर ऑल्सो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट स्लाइड. इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है मोटर बेयरिंग्स के. धुले, I told them, irrespective of whatever the conditions, you just replace the bearing. Don't see कि whether the open करके bearing घुमा के देख लिया है whether it is okay or not. You cannot do that. And अगर हम एक पॉइंट लोड पे रोटर को रखा है, बेयरिंग डैमेज हो जाए. एंड हियर जो है इन लोग ने जो ACPP2 में जो है ये एक जगह है जहां पर मेजर इश्यूज हुआ है, जहां पर इन लोग ने बेयरिंग रिप्लेस नहीं किया. एंड व्हेन दे स्टार्टेड फॉर ऑन नो लोड, बेयरिंग्स का बहुत सारे वाइब्रेशंस आए हैं एंड दे हैव टू डू द रीवर्क. तो ये एक प्रॉब्लम मेजर है जहां पर इफ आई से इट इज अ लर्निंग दैट डोंट लुक whether the bearing is okay or not. If you keep the motor for say 10 to 12 years, it is bound that bearing will damage. Except general bearing. General bearing का जब आपका जो मोटर्स विद जनरल बेयरिंग हमने उसको क्या कि पूरा टेस्टिंग किया, UT आपका DP सब किया, we did the measurement and that motor is running in good condition. रेस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द स्विच गियर, ये एक मेजर इशू है, अभी भी है, क्योंकि वी कैन नॉट मेंटेन दैट क्वालिटी एज अ न्यू स्विच गियर्स. हम कर ही नहीं पा रहे. एंड द प्रेशर इज सच दैट एवरी डे वी वर आस्क्ड तो भाई ये मोटर को चलाना है, इस मोटर को चलाना है, एंड वी आर बाउंड टू डू इट. डेफिनेटली वी आर बाउंड टू डू इट बिकॉज वॉट एवर मीन्स वी हैव, वॉट एवर मटेरियल्स वी हैव टू रेक्टिफाई एंड डू इट. HT vacuum circuit breakers में issue था. Even when I was at NTPC Gadarwara, we have a issue with the vacuum bottle. Vacuum bottle बीच में क्या है कि इसका जो वैक्यूम निकल जाता है एंड उसका रेजिस्टेंस बहुत कम वैल्यू आता है. एंड as soon as you insert the breaker, there will be a flashover, a chattering sound आता है. Then generator bushing, my colleague he will present that presentation. Cable schedule एक major issue था, क्योंकि we don't have any cable schedule, हमको prepare करना पड़ा, and the team worked very well to get this cable schedule in time. And the main reason is that for these reasons we could not do the quality commissioning. हम quality commissioning नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि there are many issues.
because we cannot stick to the quality commissioning because the project will get delayed. And with this all hassles, with all these problems, we could roll the turbine and we could do OCC, SCC, जनरेटर का OCC, SCC किया हमने और उसके बाद डेड बस चार्जिंग किया विथ द कंप्लीट टीम वर्क ऑफ ACPP. हाँ, कुछ लर्निंग्स है इधर भी. व्हाट आई यूज्ड टू डू, if they working on the switchyard, I just prepare a checklist. चेकलिस्ट एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जहां पर यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर रिमार्क एंड जस्ट फॉलो दोस चेकलिस्ट एंड डू इट. इधर हमने हर चीज के लिए हमने चेकलिस्ट बनाया. स्विचयार्ड के लिए हमने बिफोर कमिशनिंग व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू चेक, द चेकलिस्ट इज प्रिपेयर्ड, ही इज देयर. ठीक है, रिटन प्रोसीजर होनी चाहिए हर चीज का. वी मस्ट हैव अ रिटन प्रोसीजर वॉट एवर वर्क वी डू इट. And every commissioning activities should have a protocol witnessed by third person, जो हम लोग का ऑपरेशन का है. नहीं तो टुडे और टुमारो दे विल से नो इट इज नॉट डन. सो एक प्रोटोकॉल वो भी होना चाहिए. हमने आइसोलेशन नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो है इसको भी हमने बनाया. व्हेन आई वाज एट गाडरवारा बीइंग HOD इलेक्ट्रिकल, आई जस्ट वर्कड ऑन दिस. ऑपरेटर्स इतने फ्लैश ओवर होते थे CNS स्विचगियर का, there was many flashovers. I just made it a point कि I will work on this. उसको हमने क्लासरूम क्लासेस लिया जितने ऑपरेटर्स हैं. उसके बाद उसको जो है साइट में हमने ट्रेनिंग दिया. दिस प्रोसीजर अभी आप उनसे अगर बात करेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ HT स्विचगियर, वो रटा रटा है उनके पास. I made him like that only. And we could reduce. I cannot say zero. We could reduce the जितना फ्लैश ओवर है वो कम रिड्यूस हो गया. एंड फॉर दिस ओनली वी रिक्वायर अ सेफ्टी ट्रेनिंग टू इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स. एक है. अभी भी प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल जो है हमारा एक मेजर हैजर्ड है. हम टाइम से कर नहीं पा रहे हैं, सो दैट हमको कुछ डिले हो रही इसके कारण. बट विद दिस ऑल वी हैव डन दैट. जितने भी जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया है. एंड within say 5-6 months we will able to make it unit 2 ready. Okay, that's all. Anything else? मैं I just want to give some tips to new this क्या बोलते हैं इनको, स्टूडेंट्स जो हैं. हाँ, स्टूडेंट्स बोलते हैं. जस्ट आप एक छोटा छोटा चीज ले लीजिए. आप एक स्विचगियर का एक मॉड्यूल ले लीजिए एंड वो मॉड्यूल में वर्क करिए. उसका पावर सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स आता है, कंट्रोल सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स आता है, उसको करिए. एंड ईच कंपोनेंट इज हैविंग अ फंक्शन. फ्यूज का क्या फंक्शन है, ओवरलोड को कैसे सेट करना है, ये सब चीज आप छोटा छोटा चीज सीखिए. देन यू गो टू द मोटर. मोटर का आपका जैसे सर ने बोला है, आपको देयर आर मेनी, आपका फ्यूज ही आपका जो है अगर बुक में देखेंगे देयर आर 100 पेजेस ऑन एक्सप्लेनेशन ऑन फ्यूजेस. आप उसको छोटा छोटा चीज देखिए एंड देन मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट स्टेप. आप मोटर को पढ़िए. वाई मोटर इज टेकिंग स्टार्टिंग करंट, बहुत प्रोटेक्शन देखिए, क्या क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या हमको उसके लिए प्रोटेक्ट करना है. ये सब छोटे छोटे चीज देखिए. उसके बाद क्या है कि यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो थैंक यू ऑल.
net power company, and it was under half electric condition for the last 10 years. HCL Group acquired it in November 2023. Working in this project, I think, from May 2023 on. Yes, yes, the plant when it was acquired. Top view of PTR, you can see the changes is even within the graphics. And you can see the view of the boiler. This was the condition. Completely the boiler was in perfect condition. Next, next. So I will check on some of the learnings in the generator. Initial condition of generator was it was found in unstable condition. The higher value was shown. The taking of stator and the research was found deteriorated as lead. The junction boxes where the stator parts are missing, and it was also found the the most interesting is that the leap of accessories they were completely missing. They were not installed in the generator. Also, the spares were not available at site. We tried to find the spares, but the good spares on site. And the exciter is a very major component. It was also not available. Like, like, so this is the image of our sticker and data. This is the image of lead box. In this one, you can see the condition of rotor. Actually, the bottom part, नीचे से अगर आप इस बटन लगी ये रोटर का कंडीशन था स्टेटर का लकीली एंशियल्स लगा हुआ था लेकिन बॉटम वाला पार्ट यहाँ पे दिखा था इस साइड का ये डमी प्लेट लगा हुआ है देयर आर 6 लीड्स कम्स आउट फ्रॉम द स्टेटर कंपोनेंट तब डमी लगा हुआ था इसके आगे का पार्ट कुछ था ही नहीं राइट बफर एक्सटेंशन रूटिंग फ्लेक्सिबल कुछ भी नहीं था राइट initially, the preliminary action it was taken by our team. We conducted the low voltage test. Because higher value is low, you cannot conduct the high voltage test. The low voltage test में LFIT किया, LFIT test was successful on the source. And the winding resistance was taken for both stator and rotor. It was also okay. The impedance and RSO testing for the rotor, it was also achieved. थोड़ा रिलैक्स था कि इलेक्ट्रिकली द मशीन इज ओके एंड वी कैन इम्प्रूव द हायर वैल्यू विल शैल कैन तो ऐसा हम होते हो कि एक बार हिटिंग करके देखते हैं कि हायर वैल्यू ये ट्रेंड मेंटेन कर रहा है कि नहीं और अगर हमने वो ट्रेंड पकड़ लिया तो बाद में दोबारा वो ट्रेंड आएगा ही आएगा तो हमने हिटिंग करना शुरू कर दिया तो लगता है वी गेट दैट ट्रेंड लगेगा उन तक पहुंचे Started with the GOP guy training, सकते हैं हमें छठे का ट्रेनिंग ले रहा है छठे का ट्रेनिंग ले रहा है क्योंकि 10 साल से जो 10 जमा था उससे भाई ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग ये अप्लाई द इंस्टॉलेशन चेकिंग over the router आप देख सकते हैं चेकिंग router इमेजेस राइट मुझे after the red warning of the setup to right right ये एक बहुत ही important observation था we found this type of corrosion type of thing in the integration part of the signal bar themselves. Just तो बहुत सारा उनको observation मिला था so then they did by doing repair by using resin and sandpaper जो CHL recommend करता है पता करते हैं then पता है सारा जो effective साथ repair
जैसा कि मैंने बताया था कि ये लीड बॉक्स का पूरा कंप्लीट असेंबली ये मिसिंग है। देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द ओईएम एट ऑल। वो मटेरियल अगर हम फीमेल बी से प्रोसेस करेंगे which will take around 1 year and our project deadline was very short. In that condition, that condition, luckily uh, we had a we had given a contract to one of the old plants at Bombay. Actually, our plant is 525 megawatt and that plant was 500 megawatt. So that was the old plant, I think 30 years से ज़्यादा वो चल चुका था and that was under shutdown. Plant का lead box accessories को हमने ट्रांसफर किया to our site. And एक क्वेश्चन था कि 30 years चलने के बाद वो बंद था तो वो एक्सेसरी चलेगा कि नहीं, that was the question. So next one. These are the components I mentioned. If we need urgency, what was extension, between convert technical, Teflon, Teflon, and everything. Next, next, for the student, we call busbar extension. यहाँ पे डमी मैंने दिखाया था ये डमी प्लेट्स यहाँ पे लगे हुए थे और यहीं तक जनरेटर ऑपरेबल थे कि आगे का कुछ नहीं था। ये busbar extension का ये टोटल 6 रहते हैं जनरेटर में UGW and XL और 6 डिफेंस रहते हैं। These are the copper flexibles. These are the face-to-face insulation plates made up of textolite materials. This complete assembly, luckily, we got it from Bombay plant. It was an old plant. You can see after that delivery, we were relaxed and we found this material. In the first work, you can see these are the old rubber extension pipes. These are the Teflon meters we use for filling the machines. And you can carry very high current to pull down the heat dissipated cylinder. And these are the insulated electrolyte plates. Next, so after doing quality checks, what we found, the copper flexibles, the distillation plugs, and the Teflon lead pipe, they were found acceptable. But there were two critical observations. One is the buffer extension, it was not matching because it is a tailor-made thing. जनरली क्या होता है ना, जब जनरेटर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो फेयर कंडक्टर जो है उससे फिक्स किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट मेजरमेंट फिर इसको रेड हॉट करके वो एंगल मैच किया जाता है तो हर जनरेटर का जो बदला यूनिक ही रहेगा। और जो बॉम्बे वाला जो प्लांट था उसका बदला मैच नहीं है। आई तो सिर्फ 5 में एडजस्टमेंट कर सकते थे लेकिन एक में तो एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन था जैसे कि मैंने बोला था 6 बुकिंग्स आए थे, इसमें से ये 2 बुकिंग थे वो डिफेक्टिव थे, मतलब प्रेशर टेस्ट में फेल हो गए। बात कर रहा था तो 10 बुकिंग थे तो हमने ट्रायल असेंबली किया और ट्रायल असेंबली में एक 10 एक्सटेंशन का मेजरमेंट रेड एक्सिस में सही था बट एक टाइम वाई एक्सिस में इसका डेविएशन बहुत है। मुझे चैलेंज वाज दैट अगर हम एवर में सपोर्ट करना होगा ना हम इसको ओईएम के पास भेज सकते हैं और इस चीज को हमको साइड नहीं करना था और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सेकंड ऑप्शन टोटली वाज नॉट अवेलेबल और इसको करने के लिए सबसे पहले भगवान एक्सटेंशन ये साइट दिखाया था इसका इंसुलेशन को सील ऑफ करना पड़ेगा। इसको रेड हॉट हीट करने के बाद फिर मोल्ड करके उसका जो एंगल है वो चेंज करना है। अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट सेकंड चैलेंज इस इंसुलेशन को उसे री इंसुलेट कैसे किया जाए क्योंकि वो भी एक बहुत ही स्किलफुल प्रोसेस है उसका ट्रेंड फैसिलिटी चाहिए क्योंकि जब आप इंसुलेशन को रैप करते हो तो इमीडिएटली क्यूरिंग करना पड़ता है। ये इंसुलेशन 160 डिग्री एक फैसिलिटी में क्यूरिंग किया जाए स्टार्टिंग में समझ में आया कि ये क्यूरिंग कैसे किया जाएगा। फिर हमने उसका प्लान बनाने के आगे materials were arranged on the authorized number of areas and the insulation job was successfully executed.
Yes, after the incubation, we take them to our own workshop. So that's a JSP, an old JSP, it's a workshop JSP. During the year and the staff joining. The program also had some limitations. The goal was a 160 degree नहीं हो पाएगा. Finally, we convinced him कि चलाना ही पड़ेगा इतने सालों से. And successfully जो feeding देते थे, वो finally वहाँ पे generate हुए. In the quarter events, the job was placed inside the event. या जैसे एवन का कंटेंट करना है एवन हमारा देश का रखता है यहाँ पे 160 डिग्री इसको हमने सीलिंग से हमने कंप्लीट आफ्टर सीलिंग हमने इससे जो प्रोटेक्शन सेटिंग रहता है मॉइस्चराइजर सेटिंग जो रहता है उसको हमने अप्लाई किया तो ग्रे कलर का सेट देन वी डिसाइडेड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल सेट the generator terminal voltage is rated at 21 kV. The capacity available with us has only 40 kV. So we applied 40 kV switching for 5 minutes. And the job passed the we declared this be ready for the installation. We, after installation of the exhaust, we will installation of the after next thing. As I said, two out of six they failed during the process time when the process was channeled out 6 kV per centimeter in distance from so next job is to identify from where the leakage is happening. During the soft network solution test, we found that the leakage is happening just at the junction of leakage from the iron shaft. The leakage point is clear now. Now the point is that the machine will take around 1 year to procure. Already हमने order लगा दिया था लेकिन 1 साल लगेगा नया and we have to manage with this old machine only. So बहुत सारे discussions हम लोगों ने किए. Okay. After a lot of discussions, actually it is not a regular practice to repair a machine, but we had no choice. We have to repair the machine and we have to run the machine. So for this, we had a lot of discussions and if something is leaking out means we predicted that there must be some kind of O-ring inside the machine. So if we will be able to successfully dismantle the machine, then we can find the O-ring and if we will replace the O-ring, then machine can be resolved. So it is a very out of the track thing which you have thinking. But this was the only solution. So for that, tools were required and the tools, special tools is required. Like the successfully the machine was dismantled and we found total 6 kinds of O-rings inside the machine. So when successfully the machine is was dismantled, all the 6 O-rings we took the measurements of the fluid. So accelerator told 1 mm भी इधर उधर हुआ तो लीकेज शुरू हो गया. Next slide. When precise means the measurements were taken from the graphic written. The measurements were taken by the help of telescopic gauge and 1 year temperature. And the O-rings were ordered from an authorized vendor of the OEM. So this is the O-ring. We did the replacement in one booking test as an experiment. And successfully, the booking passed the pressure check. Then we repeated the same procedure for the remaining 5 bookings. And after that, we installed the switch machine. Right? With the appointment for the bird, the red shaded multiply divided, we find the phase. It is during connection of the IGBT box, and corridor was there, so we are especially particular. So as we had already achieved the trend of the IR, so we are confident that
before going for the final city high court, sir, we conducted one conveyance of how they were going of the general bench, and we achieved the higher value more than 1 giga. Finally, after the assembling of the stator, city high court said it was conducted at 21 kV. You know, generator is rated at 21 kV. And it is a very old machine, so we cannot go beyond 21 kV because it is a risk for the old machine. And we decided we will go up to the working voltage, which is 21 kV. The 21 kV was injected for 1 minute. You can see the cutoff. The machine disputes the hypothesis. The third major challenge is that thermal is not happening with the mechanical cooking. It is a ring header. It has multiple indicators. So again, when we observe several suppliers, they told that the lead time will be more than 6 months. So again, it was a challenge. And it's very surprising that the new ring header, it was prepared in the JFL Raigad workshop. Our own workshop, they have prepared the ring header. See the remaining connect price. Next slide. The entire ring header, it is prepared in the Raigad workshop. So during installation, the entire F1 circuit and water circuit were removed. After the installation, then the generator was fixed. Here, multiple leakages were during the nickel reading. As I said, the exciter was missing, so we received from the same old plant from the plant. And after which we received the exciter. Again, in the exciter, we found lot of challenges, like the TC board, the decay was outside, filled in the microwave process side, and next slide. So we replaced the O-ring. After O-ring replacement, the leakage got arrested. Also, we changed the filters available. Also, the diodes were having high leakage current, so we replaced the faulty diode, and the bolts were completely rectified. Next slide. Next. You can see the condition of old exciter, which I think is just a few minutes. Hyderabad is O-ring 7 years. He registered under category. As third told, Arun sir had a very major role in dynamic testing. Dynamic testing के बाद the generator parameters they were perfectly fine, like FER, short circuit ratio, and other parameters like current and voltage, everything gets sorted with the generator. These are the achievements. This time of procurement was better, and it can be the benefits whenever it is learning of festival to the entire team. So this was the story behind generator of unit one specifically to one year. Thank you. Team effort, it was a team effort. Thank you, sir. Next, we have the presentation by delegate from OCDC Jail Sahar.
time that I've spent with it. That's on all. Dignitary from where to see, KCL. So, all industry representatives and their students, children. So, on behalf of OTBC, I'm Sitaram Sir, I'm looking after UFS license, and my colleague, Mr. Biswajit Bhatt, is looking after preliminary plan release to work. So, this short presentation will just focus on safety aspects, particularly electrical safety aspects employed. So, let's go to the next slide. Just for introduction, OPVC is having 212 units at 210 megawatt and later on stage to 10 with 660 units to units. Two more 660 units are in the pipeline. So basically it caters to around 30% of Odisha power. It's the only Odisha state producer. Next please. So food safety first is our core value and we believe all occupational incident can be prevented. This is our safety value. So based on we are also 9,001, 25,009, 50,009. So we are our latest management standards. Next slide. This is the volume plan diagrams. We have two volume plans. One is at 6.6 kV and one is 220 kV. Next week. So basically, just to let you all know, my plan from Siemens is already expired on the web update. So, when I plan to depends on because again the code is low, because we are set we're going to want this digging the lot. So I think the chances of starts just like the need is not big. So the tax power actually was from the similar size of the would say internet local device, it's kind of like that. So that's one of those negative and negative data. So that's the one thing that the happens with last evidence. So you go, so next bit. So particularly this is operating on business. So this is very nice and it provides the process controls separately. Next slide, please. So typically, we launched with a laptop. I will take it and space, just this. And we launched the system. You can see the links. That's very good on mistake. And each beginner that's a balance. So should be so you can listen. The concept transfer. So you talk so that's let's say we just going to next. So this this context this is a part of the right now. The person makes the start from person. Something so right?
split out. So this is third obviously. So yes, sir. So after looking at what lyrics goes around, so I'm going to look at personal steps. Next, please. Next slide. Okay. So this is update on it. The job of my seniors. So what's the next step? So it's the that one I have been license is passing this month. So this is my person. You have that person, the person. Yeah, the person. So we already know how to do. Ladies and gentlemen, the small customers. You might have size because we are strong already. You have to see that. So so stress on the same that's so the stress and the line and the solutions and the so that that's not the right one to say that that's not down in the so the red bears are going to guess a bit it's got a so we discussed so next please and after that was a great messages so this is the next one. Good afternoon. Whichever what someone or people report, or if we focus on the environment, sometimes many around us, and I continuously attempting the area for more than 3 to 4 years, and it was working satisfactorily. So coming to the next thing, this is really our first study. Each and every baker, each and every farmer who have done our class study, and according to that, we have tested the stickers, we have labeled each and every product for our class stickers, or it is labeled what is our class range, and what are the PPs to be used. Next, please. We have made it mandatory for all people to wear FR cloth and every service. We made it mandatory to keep the interest tickets as per natural ceremony. We are changing the photographs. We take that of all photos. We picture of these pages. Next, please. We have a robust lotus system. You might be having the lotus system, but ours is a little different in some aspect. I'll focus on that. First thing is primary and secondary verification. In any kind of isolation, verification of that isolation is very important. In our system, after isolation of any equipment, the first verification is done by the operation department. And the second verification that is done by the maintenance person is going to work on that equipment. So after verification, make it verified. The second thing is with the auto limits. That means knowing the big mistake. The operation person knowing does the mistake, and the third people, whether the maintenance person has identified that mistake. So in that way, we can keep track the call by if somebody does any mistake, we return them. And next slide, please. Below the flow insulation painting, many plants must have adopted this. But the advantage of this for us is government of IRRD. In case you are having nets, it is difficult to make the IRRD on by adopting this, it has been every special government and we posted this insulation paint that is sustainable up to 78 kV. So that is a good thing. Next slide, please. This is a new technology we have been adopting. This is QR code technology. We have kept all the drawings in a database, and if you scan the QR code, you can get the drawings. In this way, we are putting one step forward for
lesser carbon footprint. So minimizing the control documents. Next slide, please. This is another technology initiative, drone technology. Using drone, we can approach the unapproachable areas. Like the chimney token, the footprints of an ash line. So there is emerging water. Inside the bunker, you can see the shell condition first one photo, the cell condition. The third photo you can see damaged top. Because the sheets are damaged, we can see that through drone. And everything that's they have everything through drones. Next slide, please. As I told you before this slide, in case of any errors by any person in mock water audit, if we find they are making a mistake, we do immersive and interactive training. That is not limited to partners, not limited to people. Every training, we have implemented it and we have done immersive training. Next, please. Next slide, please. These are some of the photographs of our collaboration work. And next, please. These are the awards and accolades received in last year. It was a received National Energy Collaboration Award. It was received by our Manuel Doctor. This excellent energy efficient unit. This People Energy Ownership Award. And so it was and power generation company of the world joined Bangalore, 50,000 and State Energy Conservation Act. So next is from the entire time of Apodesa, now it's an opportunity to showcase the role of sector safety. Thank you. Thank you, sir. For the last presentation of this technical session, I would like to call Mr. Arjun sir, JPL Tamnar, to present on the topic switchyard 400 kV and switchyard 33 kV system modification. Good afternoon to seniors, my friend, colleagues. Myself, Arjun Kumar Ram, working in electrical department, looking after switchyard. Myself, along with me, Mr. Trambak and Mr. Varun is there. Actually, our stage 1 unit was commissioned long back ago, in about 2007, 2008. So now we have a challenge of running the plant on full PLF and maximum availability. We are facing the challenge of aging of the equipments. So to run the equipments in their utmost capacity and full efficiency, we have carried out some of the modifications to avoid the failures and run the plant on maximum capacity. Next. Some of the work, some of the modifications we have done in our plant, I will be explaining. One of the failure we have in our stage 2 switchyard. What happened that one of the breaker failed at the time of line fault. Actually, at the time of line fault, the breaker had to be breaker had to isolate the fault, but breaker opened, but due to the some mechanism issue in the breaker, some contact failure, one of the poles didn't open. And what happened, that fault cascaded and caused the blackout of our stage 1 unit. And we had done the RCA about that failure, that how did it happen, what happened. And when we have done the detailed analysis of that failure, we find out that there was some underlying issue with the breaker quality, breaker
the contacts and that previously have been communicated with the OEM, and OEM was working on it. And by looking after that failure, we had taken a big drive to test all the breakers of our switchyard. And almost 63 poles are there in our stage 2, 600 megawatt. And what we have done, we have carried out all the testing on the breakers that have to be done in SF6 breakers, like DCRM test, SF6 purity, IR value, the timing, CRM, pole discrepancy functional test, with all we have done. And we were able to find out a lot of issues in the breaker, and in some of the breakers that were deviating the standard value that have to be as per that has to be as per the OEM recommendation. Here we have charted out the values of the breakers, how many breakers we have tested, and how many breakers we are deviating the values. And we found out that 18 of the in SF6 gas, 18 were deviating the values, their purity. Some HF presence was also there, and 5 of them were the CRM was there. CRM values were exceeding. DCRM also 5 breakers, and circuit were okay. These all the non-satisfactory breakers have been rectified. We have taken up and we have rectified. In that testing drive, we found out that one of the breaker DCRM value was abruptly high. That we have the testing DCRM chart, the snap we have attached for your reference. You can see here, before the value of the DCRM was both poles values were a lot of ripples we can see here at the time of closing of the breaker. And after the replacement, we can see the smooth resistance value, dynamic resistance value of the breaker. This is the kit, Vika kit, that we use to analyze the quality of the SF6. That these are the values that have to be maintained as per the OEM recommendation. That like the purity should be more than 98%, SO2 should be less than 0.02. Dew point is a very critical value that we have to maintain above -35 the pressures. Next. This is the benchmarking value as per OEM for the contact resistance measurement. That in CGL breaker, it should be less than 75 microohms, and this is closing time and opening time. We have we have tested the contact positioning measurement also. Measurement we have done that as per the OEM manual, these at the time of open position, at the time of closing, the contact touch and close position, what measurement it should be, that we have verified as per the OEM manual. And wherever we have found out the discrepancy in the value, we have adjusted the mechanism and meted the value. The pattern, the DCRM pattern I had shown you, the same breaker we have replaced, and after replacement we have opened that breaker for the inspection, that how the DCRM value exceeded that much. And we found out that there was lot of SO2 dust, HF dust accumulation in the breaker, and fitting was also there in the breaker pole. And in that way, we are very happy that we were able to successfully avoid a big failure that could have happened in our plant. And this is the main contact, and the outside is the arcing contact. You can see that we used to clean and rectify. And these are all jobs we have done in coordination with the OEM. CGL representative was present with us, and we have done all that job. And one more thing, that the OLTC in our plant, actually in stage 1 and in stage 2, it was not changed from last 14 years right after putting the machines in commissioning.
And the values were set as per the voltage level of the grid at that time. That time it was the voltage level was a bit high for 430 kV. But with respect to time, currently the voltage has been reduced to about 410 kV, 410, 415 kV. So respectively, the voltages in the lower side, in LV side, have reduced, and that we are facing the voltage, low voltage issue in some of the areas like our mine side, CHP side, or washery side. And in generator also, the generator was pumping more MVR, and the active power margin were reduced in our stage 1 generator. So that was also one issue that we have taken up. And OLTC maintenance we have done. We have diverters which we have done overhauling in coordination with the OEM. The maintenance of the OLTC has to be done before changing the tap, because this is pie chart we have attached here to show you the criticality of the maintenance of the tap. That this pie chart, we can see that 31.16% of the transformer failure is due to the failure of the tap changes. So this was very critical for us before changing the tap, that it has to be maintained properly. That we can see here the diverter switch we have taken out, and we have done proper servicing. Some of the diverter switch we had found out the pitting on the contact, that we have cleaned up. Some of the contacts we have replaced also. And now this is the just we have attached one picture so to show you the how the tap changing takes place in transformer. Actually, there are resistor and diverter switch, and when the command is given to for the tap changing, the current reduces, the coil gets shortened, and in between to avoid the arcing and to increase the current, the resistance comes into circuit, and after that gradually the tap changes and resistance goes out. So this is a graph you can see here. The current is at the time of giving command of tap changing, the resistance is coming into the line and the current is being reduced. And this is the yellow one is the transition this time at the moment where the resistance is in line, and after some moment the tap is being changed and current is being maintained. So DCRM actually we had carried out the DCRM test of the after doing the overhauling of the tap changes. DCRM actually rarely this I think rarely this test is being carried out in other plants, but we have taken up to know the healthiness, proper healthiness of the tap changer. That we have taken the values of before doing the overhauling and after overhauling also. Though both values we have compared. And DCR is basically a test that can tell us the exact healthiness of the contacts and the whether the transition is happening in a proper manner or not. The above graph we can see the transition current, that this transition current should follow like this pattern. And if there is any issue in the contacts of the diverter, then the top peak will not be smooth. It is we can see it as a smooth graph. But when we will have any issue in the diverter switch, then there will be a lot of ripples on that curve. So from that we can identify that there is some issue in the these contacts of the diverter, and that need to be maintained. Below the graph you can see the current signature of the motor of the mechanism, tap changer mechanism. From that also we can get the idea of that what is the mechanism, how is the condition of the mechanism, if it is jammed, bearing is in okay condition or not. All that we can take the idea. And we have done an intent also. We are purchasing this kit because we have to do this practice on continuous basis. This is the contact I have shown just to know that this is the diverter switch contact that
was found in SIT2 diverter that we have replaced. Next. Yes, and some of the problems we had find out in transformer at the time of maintenance that I have just highlighted here for your information. In stage 2 GT1 250 MVA R phase transformer, gases were rising above permissible value. In stage 1 ST3, at the time of testing, in the time of overhauling testing, we found out that core was grounded with the body reactor. And yeah, one more issue was there in stage 1. Our reactor was having the S2 value was rise uh, above the permissible limit. And all of the three issues we have been able to rectify. We have, and I would like to highlight that I have started practice of doing the internal inspection of transformer. Stage 1, unit 1 GT we have done. We have sent the samples, paper samples to CPRI, and we are giving sample to PGCIL also for doing the Furfuran and DP test of the paper to know the aging of the transformer and this installation. Next. This ST stage 1 one finding we had in stage 2 ST GT1 RFS. Trembak will explain further. Trembak? Good morning to all of you. Actually, okay, this was the gas DGA trend for our GT1 R phase transformer. You may see that ethylene, methane, and ethane, both all the gases are rising alarmingly with each test. So, and this test, the Duas triangle analysis and Rogers ratio analysis shows that there is some heating issue in transformer, heavy heating issue. So we have done the internal inspection of the transformer, and we have found that the neutral bushing of the transformer has a tapered neutral bushing fixture. That is, the thimble is uh, a little bit tapered. So the heating issue was caused by that. Sir, this is the neutral bushing. When we have done the internal inspection, you may see that in the first picture, there is the carbonization of bolts in first picture. After that, we have opened the thimble, opened the connection, and uh, we have found that there is a tapered connection in the thimble, and heating issue is observed in whole neutral bushing. We have changed the neutral bushing, and the heating issue is resolved. Yeah. So this is SP3. During the 10 delta testing of the transformer, we have found that all the testings uh, till the HV side testing are okay for the transformer, but
megawatts. Right now it is 10 megawatts. So we take it, it will be 10 megawatts. And Sir, we have the presentation. As we working towards the end of the session, I would like to call upon stage two very young talented graduate engineer trainees that are really talented to give us a brief and execute a summary on their two-day conference. So I would like to call Ashok and others. Please come here with right to call. Good afternoon to everyone. Now we are at conclusion of our 2 days national conference on the powering electricity through innovation, safety and the best practices. Throughout this event, number of insightful presentations were delivered by our delegates from representatives from NTPC Lara, NTPC Daraipalli, NTPC COC Raipur, JSW Jharsuguda, by our OEM L&T Siemens, expert presentation by our Jory sir, Vishkarma sir, by our presentation by our JPL Angul plant and JPL Thermal plant. We will now briefly summarize the key points discussed through during this presentation. In a day one, first presentation delivered by the NTPC representative from NTPC Lara. The presentation focused on the load fluctuation at NTPC Lara and nearby station. They discussed the action of TSR relay and due to activation of the PLU tripping of unit objects. Through the productive discussion between our expert, we were identified the cause of the problem is subsynchronous resonance with series capacitor compensation transmission line are due to the commutation failure in the HVDC substation. Next presentation on the partial discharge, covering its effect, identification method, using a camera and acoustic based technique. It was highlighted that a broken equipotential link is a root cause of the partial discharge issue, and this can be addressed through the corrective and proactive maintenance. Next presentation is delivered by representative from NTPC Daraipalli. The presentation focus on the best practices in OEM, which include safety practices, new initiatives like in partial discharge test, OLTC inspection and testing of health, assessment of earthing or lightning system. Additionally, he explained the working of breaker monitor logic. Next presentation is given by representative from JSW Jharsuguda. The presentation focus on comprehensive islanding and local management, in which in their previous scheme, all 7 circuit breaker could trip at the event of great disturbance initiate the unplanned islanding mode. However, due to the implementation of CILS MS scheme, they resolve this scheme issue. Next presentation is given by our expert, Jory sir. The presentation focus on the electrical equipment, condition and monitoring techniques,
in which he covered the maintenance philosophy and explained the 4 conditioning monitoring scheme, including LALCM, infrared thermography, application other than the electrical equipment, motor current signature analysis, role of AI in a monitoring performance and energy consumption. Next presentation is given by our JPL Tamnar plant. The presentation focus on the 250 megawatt generator stator on-site rewinding, in which our stage 1 unit 1 generator trip on the 100% stator earth fall, negative sequence, reverse power and a low forward power protection. Observe the flashover at 2 o'clock position of the stator core. Further, the presentation focus on about the global VPI process and the proper step taken for the rewinding of the stator will be take place on the on-site. Next presentation is also delivered by our senior colleague from NTPC, JPL Tamnar. The topic focus on the J-strap modification of 600 megawatt generator rotor. 600 megawatt generator rotor in a JPL Tamnar experience J-strap failure, which lead to failure of auxiliary equipment due to the improper manufacturing and the oxygen exposure. Additionally, cracks were discovered in the slot wedges. By taking necessary corrective actions, damaged part of the generator rotor were successfully replaced. Next presentation is delivered by our representative from NTPC COS Electrical. They brought variable 27 case studies on our table, providing a real-world example of the challenges and solution from which we get the importance of the manufacturing, erection, and the maintenance of the equipment. Coming to day 2, the first presentation was from the L&T. The presentation was focused on the intelligent motor management relay, highlighting its advantages over the conventional relays, such as control wiring complexity reduction and capabilities to store the data. It also covers the metering and control functions to ensure reliable motor operation and protection. The second presentation was based on the dissolved gas analysis DGA in the transformer, emphasizing the importance of transformer in electrical systems and need for the conditional monitoring for the proper oil sampling and the gas extraction are crucial for the DGA testing. The presentation was very insightful and informable. The third presentation was based on the digitalization. The speaker from Siemens shared cutting-edge developments in electrical automation and systems. Some technologies discussed are NX power monitor, intelligent rack-in rack-out device, automatic dehumidifier and temperature controller. The presentation featured trailblazing ideas and technologies that are set to redefine the future of the power and energy sector. Coming to the next presentation, the JPL Angul gave us a thorough walkthrough of the revival challenges at both JPL Dhule Power Plant and ACPP2. JPL Dhule Power Plant was ideal for 6 to 7 years, and the erection of the ACPP2 was incomplete. So they highlighted major issues like generator winding temperature was on the higher side, motor vibration in case of the Dhule Power Plant, and in case of the ACPP2, IR value was found low, stator bar junction found damaged, exciter was not available at the site. So they faced a lot of challenges and they did the testing. After overcoming all these hurdles, the task was complex, but they made it achievable. Then coming to the next presentation, the speaker from OPJC presented a case study on electrical safety. The presentation was very informative. The last presentation is by the JPL Tamnar on the switchyard 400 kV system and 33 kV modification were highly informative and insightful. The technical depth and the practical examples shared were truly valuable for understanding the complexities of the power distribution and grid stability. This session was very informative and interesting. I hope we get another opportunity to participate in such a conference and continue to get insights and learnings from experts of our power sector.
I would like to conclude my part with the quotation: great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. I believe that together we can reach new heights for the power sector. Thank you. Our ED and HOP is coming in another 5 minutes. So, one more session, concluding remark by our very learned expert, Shri BK Singh. He'll throw some light on what my young engineers have summarized the activities of these 2 days. Sir, please, can you please? So first of all, kudos to all of you who were so patient from throughout the 2 days session. It is something which is very heartening. अब देखो मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट what we have learned in the last 2 days. If you consider knowledge, it is an asset. Knowledge, it is an asset to any organization. And managing this particular knowledge is a kind of strategy. Are Singh Sahab? So as I said, the knowledge is an asset to any organization. And how to manage this particular knowledge, it is a kind of endeavor on the part of every organization. The basic objective of managing knowledge is to multiply the knowledge. As I said earlier, it is an asset. You will have to multiply this particular asset which is available within the organization. When we conduct such kind of conference, this is the basic objective behind conducting such kind of conference. Because this kind of conference is giving you a kind of platform where all the people, I can say all the presenters, including the participants, who may come over here, who have come over here, given their presentation, share their knowledge, which they have not acquired through the books, which they have acquired through their own creativity, through their own innovation, through their own experiences, through their own knowledge. And all these things you will not find in any library. These things are available in their minds. So this type of knowledge we in general call a kind of tacit knowledge. So such kind of platform is a must kind of situation for dissemination of knowledge within the organization and across the organization. Last 2 days was when you look back the topics which our presenters have covered, it was so enriching. It was so useful. Every individual, when you go outside, you will find the purpose of attending this particular program and this particular platform from where you people have listened to all the presenters. I am confident that this particular inputs will be very, very purposeful
and will be very, very grateful. At the outset, I would like to express my uh, sincere gratitude to ED Tamnar, Sri CN Singh Sahab, Sri Sanjeev ji, all HODs for giving me this particular opportunity to be associated with this particular workshop. Of course, it is a kind of initiative taken by respected ED CN Singh Sahab. At the same time, it was closely monitored and managed by Sri Sanjeev ji, and of course, the man behind the entire scene, Mr. Jha. I'm not finding that gentleman over here. So, his sincere efforts from the past 2 days, I think that has resulted in a a very result that has resulted a very good outcome out of this particular efforts. So thank you, and I wish all the best, and I also wish you may have such kind of platform in future where you can enrich your knowledge. Thank you. Thank you so much, sir, for such insightful thoughts and reviews and constantly engaging us throughout the 2 year conference, 2 days conference. Uh, Now I would like to call upon our ED sir on stage to bless us with his thoughts and experiences. Please, sir. Good afternoon, everybody. First, my sincere apologies for being late because we were made up with unscheduled meeting. लेकिन अपनी मर्जी से था अपनी जगह पे हाँ. Let me first congratulate all of you have been part in presentation and sharing the knowledge, because explicit knowledge can be shared on the documents and manuals, but the implicit and tacit knowledge, which really discussed amongst the people, is one of the best outcomes of these workshops. And I really thank all the presenters into the Silara, Lok Fluctuation, Ripple Tamnar team, Adani, this JSW Bhushan on the highlighting scheme, NTPC Corporate OS on sharing the case studies, Dallipalli, and Johari Saab, OEMs, because see, every day is a new development, resource and time compression. So we remember, पहले थर्मोजन कैमरा होता था, स्कॉट का ट्रॉली पे रहता था और उन्हीं को छूने दिया जाता था जो ट्रेन. एनटीपीसी में जब सबसे पहले पीसी आए, रेवती रमन साहब थे, 20M2 सेट था, तो उस कमरे में जाने के लिए गेट पास बनता, क्यों 3 जाने में अलाउड है? और आज पीसी आप डब्बे में ऐश में भी रखे हुए हो. So how the development has taken place? Technology. Technology has become popular and user friendly. Relays, protections, even sizes. And best way of sharing knowledge is sharing the failures and thought process. Incidentally, today morning, there was our investors, SBI bankers were there. They're asking me, इन सब आप लोग ग्रिड फेलियर को कैसे मैनेज करते? ग्रिड फेलियर मैनेज हो ही नहीं सकता, हो गया तो हो गया. ग्रिड फेलियर मैनेज का आपके हिसाब से कि मेरे एसेट का डैमेज ना. Incidentally, I was talking on the islands. How the island is being with the Catholic power station can really be effectively implemented in the power station.
that we have our own islanding team. The government started working on it from 90 Delhi islanding, Bombay island. It has been effectively also. There are many new thoughts coming. This is reducing the process. So outcome of workshop, my request will be the assembly and my team is keep this community live, connect live beyond the workshop also, and we create a platform we can we share normally our thoughts without any implication of their code of conduct of the company. So sharing knowledge, sharing failures, and even we can think of making some formal, informal forum. One precisely on that and sharing. And this frequently may sometimes physically meet. So we have an outcome and visible improvement on the reduction of failure, making aviation class level. We say 80. I remember the day this meeting was going on Singrauli by some regional director. हम लोग नए नए जीसी थे बोले भाई 85% अवेलेबिलिटी पे चलना चाहिए क्या तो हम लोगों ने बोला 85 पे बिल्कुल चलना चाहिए 95 क्यों नहीं चलना चाहिए बोले जीवन एक के साथ आते हैं याद मेरा जीसी जब तक हम करना देखे था gentlemen, I hope in your lifetime you will do it right. So now plants are running at 95% availability. So therefore, my desire is power plant also runs on irrigation plants here. याद है कि benchmarking exercise में corporate meeting में होती we were told that the power station can site in Surya. Whose time was only post outage of only 23 minutes in a year on average philosophy. ये 90s की बात. These workshops, knowledge sharing, providing input, learning how you have to live with it, just work it. Still in India, the quantum of power availability has become reliable. But quality of power, I don't know how we effectively define. But ask the consumer in Delhi, where some people having low voltage, Semuna area, or talk a consumer in cities, where they are not able to start even their borewell pumps because of the low voltage. So we have now the regulations, the reactive power पे भी अब ये सब आ गया ना देना पड़ रहा है लेना पड़ रहा है उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इसमें कोई आएगा अल्लाह करता था डेढ़ वाला की एमजीआर बढ़ाइए तो हम लोग एकदम यूनिटी के आसपास चलाते रहते थे सुनते नहीं थे याद है शहर में थे और ओवर पंपिंग के लिए कभी इंस्टीट्यूट नहीं आया 1 लाख का फाइन इस समय एनआरडीसी ने लगाया था उधर था डीओ के उतनी गालियां दिया हम लोगों ने इतना फाइन लग गया फिर लोग फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं कर चलाते रहे हमारे यहाँ दस से आते जो भी सर 1 लाख एक दिन आएगा ना कि 1 लाख 10 लाख नहीं गया every failure. And for us, every failure is the beginning of the learning. The stepping stone of the truth. Let us take every failure as a new challenge, the opportunity of new innovation, invention. Try this all, this workshop. Very successful. Thank you to everybody, to all, especially to our chip team, and all participants who made it possible by taking their time, coming here, taking the trouble of being here. I wish that everybody takes and take away something that will be useful on their plan or other plans, their even their own intellectual property. So every knowledge is your own intellectual property. Now, an organization can take your definition and job, but not your IP. That's what I tell everybody. आप जो सीख लोगे तो कहीं ना कहीं काम आए. संजीव इन्वेंट किया होगा
all those papers, photographs, kindly share to everybody and keep this community life, sharing, caring, and working together. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such motivating words. Coming to the end, I would like to thank everybody who was directly or indirectly involved in this conference and make it a success. Thank you for your patience. Last but not the least, I would like to call Adyasha Priyadarshini Sahu, one of our talented young graduate engineer trainees, for vote of thanks. Can you please have a round of applause? Thank you. As we draw this conference to a close, I would like to extend my sincere gratitude to all of you for your active participation and contribution. Your insights, discussion, and engagement has made this event a resounding success. I would also like to express my heartfelt appreciation to our dedicated volunteers, including staff, GETs, and PGDP students. Their tireless efforts and unwavering commitment has been instrumental in ensuring the smooth operation of this conference. A special thank you to our attentive and engaged audience. Your presence and participation have created a dynamic and stimulating atmosphere that has enriched our discussion. As a learning institute, JIP will continue to host such events in future. Thank you once again for your presence, your invaluable contribution. It is through your collective efforts that we have achieved such a fruitful and memorable conference. Thank you. Thank you, Adyasha, for that heartfelt vote of thanks. I would like to express my sincere gratitude to all of you for your active participation and contribution. Your presence has made this conference a resounding success. As we conclude this enriching session, I invite you to join us for a lunch. The lunch will be served at JIP. We will share all the presentations in a Google Drive whose link will be available soon. Thank you once again for your time and enthusiasm. Thank you. तो हर आदमी समझता है उसी ने पहले से कभी हुआ है सबसे पहले होना इन लोग देना